A very warm good morning to all the participants. I would like to welcome our external expert for the expert talk on process of innovation development and technology readiness level and commercialization of lab technology and tech transfer. Dr. Asutosh Pastor is currently working as manager startup incubation in Foundation for the Innovation and Technology Transfer, Indian Institute of Technology, Delhi. Previously, he has worked as manager biotechnology business incubation facility in the Foundation for Innovation and Technology Transfer, IIT Delhi. He was the visiting scholar of University of Pittsburgh, USA. He has awarded PhD in biochemistry and molecular biology from IIT Delhi and received MSc degree in microbiology from Jivaji University. He has published several research papers in highly reputed SCI Index journal and delivered expert talk in various seminar, conference, and international repute as well as in India and abroad. So I would like to welcome our speaker. Thank you, sir, for accepting our invitation. Thanks a lot. Over to you, sir. Great. So thank you for the kind introduction. A very good morning to all the participants here. I can talk in English, or if you guys want, Hindi में भी बात कर सकते हैं. तो जैसा आपको ठीक लगे, you can let me know. We can keep it a mix of English and Hindi. That is also fine. Great. So hope all of you are doing good today. My name is Ashutosh. I'm working as a manager for startup incubation, the Foundation for Innovation and Technology Transfer here at IIT Delhi, which is also my alma mater. In a sense, I did my PhD from this campus a few years back. So primarily, we'll be discussing today about technology readiness, manufacturing readiness, maybe to an extent investment readiness and all, and also why these things are important. And before that, I'll give you a brief introduction on what all we do here at FITT at IIT Delhi, like how the organization works and what all we try and support, so that in case any of you need some very specific support in some area, so you can reach out to us and take that support. So quickly, I'll share a presentation. I hope you're able to see my screen now. Or... Yes, sir. Yes, sir. Yes, participant, yes. you can unmute yourself also for making the interactive session. When you have any query and sir will allow, then you can ask your query also. Yes, we can see this. I'm open to questions. You can ask any point of time. In case you want to nudge in between, you can do that. If you want to do it at the end, that is also fine. So I won't take too long. Maybe I'll just finish 45 minutes to 1 hour maximum with the presentation, and we'll keep a lot of time for discussion. So with that, just give a brief introduction about the organization, the Foundation for Innovation Technology Transfer. So it's almost a 3-decade-old organization now. We started in 1992, and it's been a tremendous journey since then. So the foundation primarily is basically a special purpose vehicle, or you can say an agency created by IIT Delhi for commercializing the technologies that are being developed by academic research. Now, we do a lot of different things, and the whole mandate is to commercialize the technology wherever it's developed. And obviously, startups are like quite a buzz these days. And also, it's a very interesting way of commercializing the technologies that you develop. And all of you, as students, as researchers, doing something, working on something, can actually take it forward if you identify the right kind of challenges that can be solved using the technologies that you know. So we do a lot of different things. I'll just quickly talk about it. So the total, modes of engagement of an organization like ours with the industry. So it's in terms of industry partnerships. You can say like we do joint projects with the industry. We sometimes solve their problems through R&D with the faculty members and deliver them the required results. So it's kind of a contract research or a joint R&D, you can say.
Also, we manage intellectual property, not just for IIT Delhi. So for IIT Delhi, we file all the patents and all. But apart from IIT, also we are open to filing patents and tying up with different universities across the nation. And in fact, we are mandated through some programs like the National Biopharma Mission to have a technology transfer office which caters to the entire northern part of the country. So a few states and obviously startups and universities, they can take our services in case you need. And we have really accomplished people in our IPR team. Technology commercialization is also an aspect where you do a technology commercialization either through licensing it out to an industry or collaborating with an industry or doing a spin-off where the academic people from the academic lab themselves actually form a company on a project or on a product which they were working on in their academic research. So we call it a spin-off of their research. So that's how, so these are three modes of technology commercialization. I think Dr. Majumdar today will be talking a lot about this, so I won't cover more technical details on that. Startup incubation is something which is very, very important these days, and I think we are giving a lot of importance. The government of India is giving a lot of importance. So many incubators are now coming up, and almost every college is having e-cell. There are institute innovation councils. So the whole purpose is to actually promote innovation as much as possible, and it contributes a lot in different senses, be it solving our own problems, be it kind of contributing to the economy with some exports that you can do. And again, like when you try and solve a problem and you work from that perspective, actually it's quite fulfilling for an individual, yourself as well. And you can have your own team, you can have your own work timings, and also being an entrepreneur is a really good thing in that sense as well. Although there are certain sets of challenges and ups and downs, and everything is there. And also there's a lot of funding programs that are available. So I'll give a glimpse of that once I finish my general presentation. So we'll talk about some of the funding programs that are available, and in case somebody is interested and you guys are working on some idea, you can reach out to us later and discuss like what could be relevant funding opportunities for these. So without taking much time, I think we'll go straight away to the topic. Now, when we are discussing the technology readiness levels, we have to discuss about a product management life cycle. So it starts right from an idea where you kind of prioritize your ideas, identify a challenge, then so a lot of steps are involved. While discussing TRLs, we'll be talking about mainly the steps that are required and that are kind of parameters of your success in terms of where you have reached. Yeah, sorry, someone saying something. Yeah, if there's a question, should I unmute the participant? It's already okay, fine, no problem. So let's do one thing. Maybe we can take all the questions at the end so that there's no disturbance in between. So all of you can keep yourselves muted right now, and we can discuss at the end all together. So yes, so I was talking that while we will be discussing the technology readiness in terms of where you have reached in the product development life cycle, but if you talk about a project management life cycle, I think there are a lot of things to take care of, and it starts right from a stage where you identify a problem. So when we talk about entrepreneurship, identifying the right problem is a very important aspect. And once you identify a clear problem that this is what people are facing, you discuss, go ahead, talk to some people who can be potential consumers or customers, that if such a solution is available, will you be willing to pay for it? And you yourself can also think like, maybe if somebody is selling such a solution to me, will I be able to pay for it? So from there you can start. And I think that's the initial groundwork you'll have to do. So you basically identify a problem, then you generate ideas that how exactly the problem could be solved, and you create an initial proposition how you'll put that solution forward to the customers. Then comes a lot of analysis. You have to investigate further. You have to validate the market need by talking to people. You have to justify how much investment you will be doing in developing the product. Then you write your requirements that this is all I need to get this product out there in the market.
Probably this is the material cost. Maybe I might have to take some certifications. There might be some regulatory aspects and all. So you need to think of all these things even before you jump on to start developing a product with a startup. Now, once you start the development, then you start designing the solution and demonstrating it. You demonstrate that the requirements of the users are met. You go to market, validate it in terms of your customer fit, and then it's kind of a finalizing the proposition, whether the product gels well, or maybe the pilot you did with the customers, it's going well and all. And you finally do a formal launch of the product. Now, that's not the end of it. So most of the products have a typical life cycle in the market, depending on how soon the new technologies are coming out. For example, when we see very general example for a mobile phone, for instance, every year or so, every 2 years, you feel that a mobile needs to be changed because a lot of new things keep on coming. So once you make a product, it doesn't end there. You have to keep on improving on that. You add on a lot of different things and improve its functionality, usability, or sometimes just features so that it's more user friendly or it's more enticing to the users to upgrade to a new version. And obviously sometimes there are end of life of products also when a new solution comes in. So for example, mobile phones kind of to an extent replaced landline phones. Now we don't need in our homes at least a landline for that matter. So if a new technology comes in where we can just talk like telemetry, then we don't even need mobile phones. So product generally has an end of life, and obviously that comes in at some point of time. So you have to keep on a track what's happening in the market, what new innovations are happening, what new things are coming up. And when jumping onto a startup journey, I think a lot of groundwork and a lot of background work has to be done, without which I think it's not a really good idea to do. So you talk to your mentors, you talk to your incubator, you at least know what all challenges might be faced, how exactly the journey would be, at least plan 2-3 years of journey, and then you start developing the things. Right. So now I'll talk about more of in terms of technology readiness levels. So technology readiness levels basically are designed to know how far we are or how ready we are to actually use the product or actually launch the product. So the whole discussion today would be primarily centered around these points: that are we ready to go ahead and can we use this product now, and how ready it is to be used by the customers. Readiness levels are measured in multiple ways. So I'll talk about 3 readiness levels today. The most commonly used term is technology readiness level. It's basically used by a lot of people during evaluations, during technology transfers, during assessments. So you'll very commonly see this term somewhere or the other. Maybe you're filling some form and they might ask you at what stage it is or what TRL it is. So TRL methodology was developed initially in NASA when they were preparing for a launch of a vehicle, I think the Mars vehicle probably. So the idea was to have a parameter which can actually gauge at what stage of readiness it is to the launch. And it was decided that a scale of 1 to 9 will be used, where 9 is a product that is now launched. So you define, say, I'm at TRL2 or I'm at TRL4. So somebody who knows about TRL will generally be able to understand, and you don't have to explain everything to him that this is what's going on, that's what's going on. Just by telling one specific term, TRL, you can actually make them understand at what stage you are. So it basically measures the maturity level of a technology throughout its R&D and deployment phases. There's also a term called manufacturing readiness level. Now, technology readiness level primarily is in terms of the technology, where the product is being understood and the product is being developed. Now, parallel to development of a product, we also need to work on the manufacturing part of it. So while I have a product ready, a prototype might be ready, or even a final version is ready, but am I ready to manufacture it in large scale, in masses? So to understand those things, there was also a term coined manufacturing readiness level. And again, this was developed by US Department of Defense's MANTech program,
when government and industry were working together, and they wanted a solution where they can also understand manufacturing readiness the way they understand technology readiness. So manufacturing readiness consists of 10 levels instead of 9, and a full rate production is basically the highest level. So I'll discuss a bit about that, how exactly that's classified or categorized. There's also something called an investment readiness level. So this was created by Steve Blank just to understand uh, how ready a company is to take an investment. So for example, when investors invest in companies, they see a lot of different parameters, and I'll talk about these when we'll be talking about investment readiness. So how ready they are to do business, is the product ready or not? So if I put my money right now, how long will it take to get some return, or how risky is it to invest at this point of time? So with the IRL, actually, you can understand those kind of things. Now, technology readiness levels, and I'll be defining each one of them in one slide later on. But overall technology readiness levels are broadly defined in basic idea, concept development. TRL3 is experimental proof of concept. 4 is lab demonstration. 5 is lab scale validation, and so on and so forth. Now the definitions vary to an extent slightly when we talk about different domains. So for example, when we talk about product development through science and engineering, there are certain technology readiness levels. Like for example, we see in engineering the component or system validation or pilot scale is TRL6, actual system completion is TRL8. Similarly, for software, there might be a different set of TRLs where you actually see like to the installation and run, and then finally product proven and successful, and all the bugs and all are cleared. So for software, the definitions are different. I won't go too much into details. I think these things are available. I'll talk about TRLs more in the sense so as to make you understand generally if you see something what TRL would be. For medical sciences, it would be different because a lot of trials are required before the product goes to market. So for example, phase 1 trials could be at TRL6, phase 2 trials would be at TRL7, late stage phase 4 trials are at TRL9, after which the product is actually ready for development. So if you see like TRL 1 to 3 are primarily the research phases where academic research is going on. TRL 3 to 4 somewhere it starts, and then up to TRL 6 to 7, it's more of a translation and development, where a lab scale thing is transferred to an actual prototype or a working minimum viable product. And then in terms of commercialization, so finalizing the designs and everything and user trials and all, they go through TRL 7, 8, and 9. Now let's talk about all these TRLs one by one. So TRL 1 is basically at a stage where you're doing some basic research, when you're understanding the problem, when you're understanding the technology behind it. So you basically kind of give a question, why is it important? Why should we do it? How should we do it? So it's basically beginning of initial scientific research, that you identify a problem and now you start doing some research. Okay, how can I solve this problem? Then your examples could be basic studies on material properties or the scientific principles, how a machine could be developed based on certain principles and how it will work. And at this stage, primarily the focus is on fundamental understanding. So while not much work is done at a TRL1 level, it's more of an ideation, but an ideation with a background study that you have a fundamental understanding how a product could be developed for this problem or the challenge. Then TRL2. So in this case, you actually start coming down to the practical applications. Now, still not much work is done at this stage, but while you were understanding more in terms of basic sciences, so in applied research or TRL2, you think of how can I use the various materials or the various principles that you gathered in the first TRL. So basically you study more. For example, I've given some points like potential of a material or a process to satisfy technology need is confirmed that, okay, this could be used. Again, at this stage, it could be more of a speculative thing
because you haven't done most of the experiments yet. You can gather some publications, references, make an outline, and you do some simulations. For example, simulations work can come into under this stage, and the work is analytical, or again paper studies and understanding it better. Now, basically from the TRL1 stage, where it was basic scientific observation, now you're moving ahead and finalizing how you'll do the experiments and all, and that applied part is done. At TRL3 stage, actually, then you'll be going ahead and proving something. So TRL3 is basically at a stage where it's a critical function or a proof of concept is established. So you say that, okay, you can at least tell the people when you complete your TR level 3 that whether it works or not. So for example, you just see the small schematic there. You had an idea. When you reach TRL3, you just know whether it works or not. So you kind of have done some preliminary experiments to see whether the technology works based on your understanding from TRL1 and 2. So at this stage, applied research continues and early stage product development begins. Now you do experimental work. So it could be Kritika, I think you have some question. I see a hand raised. So is there any question? You can go ahead. Otherwise, we can discuss at the end. All right. So just to save time, let me go ahead. You can ask it later. Yes. Is there a question or should I go ahead? Okay, fine. Let me go ahead if nobody is speaking then. So at this stage, you do experimental work to verify the proof of concept. Yes, if you have any question, you can type. Yeah, that's also fine. You can type in the chat box and maybe we can take it later also altogether. So now, for example, I'm building a medical device or a kit. Recently we had a lot of COVID tests and all. Some kits were there, rapid antigen kits and all. I'll just give a very general example. For example, we're developing a kit. Now, the proof of concept at this stage would be whether the antigen or the antibody I put on my kit, whether it identifies the antigen or not, or if it's an antibody test. So whether the antibody is identified or not. So you can do that test in a lab scale in vitro setting and identify whether that binding is happening or not. So that proves a concept that, okay, this technology works, and then I'll start developing a product out of that. It could be either a digital device or it could be just a kit. So at TRL3, you actually prove that, okay, whatever concept you had, whatever initial understanding you had, it works. And now, based on this, you have to build the final sellable model. Now, at this stage, when you complete TRL3, your supporting information has results of laboratory tests that are performed. You have your parameters of interest and comparisons, and you know all the critical components are there. Modeling and simulation may again be used to complement physical experiments. So basically you have proven that, okay, the technology will work. So till this stage, you are not aware that your technology may work or not. So with some experiments, you have proven that, okay, the concept works. Then you move to TRL level 4, where it's about lab testing or validation of an alpha prototype. Now, just for ease of understanding, I took an example of, for example, I'm building a robot that understands things and gives you directions and helps you in a lot of different things. So at TRL level 4, I'm checking whether its components work or not. So for example, in the picture that is available, you see that it's trying to understand colors or maybe some text that is written on the paper. And here you basically see that, okay, this component of it, maybe the processor of it works. So this is basically individual testing of components. So it's again, like you can also call it validation of a very alpha prototype or validation of a component. So at this stage, you actually perform a development and lab testing of technological components.
So while you'll start integrating these components later on, but you'll individually test whether these components work or not. So as mentioned in point number 3, this is the first step in determining whether all the components of the machine will work together as a system when they are integrated. So you test all the components in the way they are intended to. And again, as I mentioned in one of the earlier slides when we were comparing, so TRL 4 to 6 actually represent a bridge where your basic research is completed and now you're headed towards a product development and later on to demonstration. So the end goal of TRL4 is to narrow down the possible options. So your all the components are now finalized that okay, these components I'll be using in building the system. So you come as close as finalizing the components of an actual system. Then at TRL5. Sorry to disturb you, sir. Sir, Sonam is asking that, good morning, sir. I need to know how all these method will applied in literature part. So Sonam, you can unmute yourself and you can ask directly. Yes, go ahead. Hello, good morning, sir. Yeah, good morning. So as I've found that all these things is applied in science part, in the computer part. Actually, I'm from PhD in English, so how these things applied in that particular part? Right. See, when we talk about technology readiness levels, is basically understanding of a level of a technology development. Yeah, So I won't say I have a ready answer to its application in English literature or something. But okay. the word technology readiness itself means that we're talking about a technology, right? So while understanding some technology, you may still use this term that you know the preparedness of the technology or when you're working. But I would say in English literature, at least I don't find a direct use of this as of now. Yeah, Okay. Thank you, sir. yeah, right. Okay, so let's go ahead. So I was talking about testing of integrated or semi-integrated systems. So in the previous TRL4, we were actually testing the components. Now at TRL5, we start assembling these components and integrating them. So system configuration that you reach at TRL5 is quite similar to a final prototype, or I'll just call it a prototype at this stage. So it does the function of what an actual system would be doing later on, but its design and everything is not finalized yet. You just take the components together and see whether they work together or not. So basically, at these stages, the system is almost prototypical, but at least the scientific risks are retired. So I would say if I know now that all the components together can work, so I'm sure that, okay, I'll be able to build the system. But now I have to also think about its design. I have to think about how to put the components together to make a good looking system and all those things. So I'm starting at that stage from TRL 5. Now at TRL 6, basically you demonstrate the prototype in an operational environment. So while you are doing some lab testing and checking whether the components work together or not, at TRL 6, you actually can check whether the prototype works in the operating environment. So does it do the user interaction that is it's intended to do? So it's more of like a technology demonstration, or it's a major step in technology's demonstrated readiness. For example, when we talk about uh, pilot scale demonstration, so yes, you can call it a pilot scale demonstration, and the full scale system is not ready yet. Now, at TRL6, when we test it in operational environment, then this operational environment should be very similar to the actual use case, the actual environment that the system will be working. And TRL6 begins the true engineering development of the technology as an operational system now. So till now, we are actually more of developing a system. Now we work on the operational aspects of it. But by the end of TRL6, your engineering risks are nullified. That, okay, this thing can be done. At TRL7, you start doing a little more engineering on it, and the system process is demonstrated in
integrated pilot level system. So this is again like the final design at this stage is virtually completed. So when we were testing initially the prototype at operational environment, in this case it's more of a pilot system or a more ready system in the operational environment. And again, at this stage, you retire engineering risk, which was already retired the previous stage also, and also the manufacturing risk. So you are now more aware of what components are required to manufacture. You're more ready, almost finalized with the final components that will go in the device. And it's more of like a almost ready to use device. Then at TRL 8, it's more about the commercial design part of it. So the technology has been proven, the engineering has been proven, you have almost tested the system in operational environments as close as the user will use it finally. It's just about giving some tweaks in the final designs. So by the TRL level system, TRL level 8, actually your final manufacturing design will almost be ready. And by TRL 9, actually the system is actually proven with the final design, all user trials and all are done. Full range of operational conditions have been tested. And the actual system is also proven through successful operations in operating environment and ready for full commercial deployment. So at this scale, you can actually start mass producing the system. So you can say start with your scale up of the manufacturing. Now, after this, it's more about statistical process control, how cost effective the system could be, how exactly you're gathering data, maybe making some more improvements. So this is the final stage. The product is now deployed. One similar example to this is, so I gave an example, a very crude example of building a robotic system that's working in a consumer store and identifying things and helping them out. This is one more example where we talk about the chevrons. So if you see in jet engines, there are these saw type structures. And why are these required? So initially, the airplanes used to have those round exhausts, which used to make a lot of sound. So that sonic boom and all that was there. So need was felt to maybe come up with a structure which can disperse the sound more, or maybe kind of nullify it through interference and all, and make it more quieter. So in the 1980s, they did some initial experiments and understood how the sound waves and all work. And by 1990s, they reached a TRL where they made a few designs and tested like how sound would go through them. In 1995-97, this reached a TRL 4 to 5 stage where they started integrating this into the jet engine, and the TRL level of 6, which was early 2000s, almost close to 2000, it was tested with a full-scale jet engine, but in the laboratory condition, not in the outside conditions. So as you see, like at TRL 1 or 2 stage, you're understanding the principle, how sound waves are coming and how they are working, how the boom is created. In early 1990s, the TRL 3 stage, you would define a lot of structures and you would just do lab scale things and see how these interferences are working. At TRL 4-5, you start integrating the system. TRL 6, the system is tested at lab scale. Then TRL 7, the system is actually tested in the operational environment on a jet. And then by TRL 8 or 9, it's ready for actual deployment. So this was done by NASA again to make jet engines more quieter, and these chevrons were developed. So this is again one example of different stages of development. Now, just to give you a brief idea, like why these TRLs are important, how these classifications work, and where these are required. So if you see general movement across TRL. So on the horizontal axis that I have, the x-axis, I have shown TRLs 1 to 9. And on the vertical axis, y-axis. Sorry, are you getting any echo from my side? I just got a comment that you're not able to hear me properly. Is that right, or should I speak a little?
far from it. Okay. So this also defines how, based on TRLs, different stakeholders like academia, industry, investors will show interest in the product, and also how many resources are required and what at what stage who provides these resources. So as I mentioned, TRL 1, 2, 3 is primarily comprising of research. TRL 4 to 7 is more in terms of tech development, and 7 to 9 is then prototype development. At early stages, it's more of academia and government labs, and the funding mostly comes from the government. But there's plenty of funding at a stage of basic and applied research, and then academia leaves it at that and looks maybe for a technology transfer and all, but not much funding is given to developing the technology to a final product. So at this stage, it's more of like small businesses or high growth entrepreneurs who can take up these technologies and develop them further for a more product like looking. So once they are ready with say technology TRL 7 or TRL 8, they can actually demonstrate that the system works. They can demonstrate its use in the operational environment, and then probably large businesses and even large investors are willing to put money in those. So this is just an example how TRL, understanding the TRL can actually help. Also, TRL 4 to 7 are again some challenging TRL levels at most of these stages. Now, for example, as mentioned again, universities will show interest only till TRL 3 or maybe 4. Industry won't show much interest unless it's at TRL 7, 8 or 9. So at the stages of TRL 4 to 7, and this is the stage where most of the entrepreneurs actually work. So there are challenges in terms of product challenges. You need better products with higher performance, more sustainability. There are business challenges to lower down the cost, improve the production times, higher ROIs. There are innovation challenges in terms of making it sustainable from a commercialization point of view. We have to do marketing and sales research and get customer feedback. And then process challenges are that universities lack resources at these stages. They just don't go beyond applied research, and industry has no time or interest till this stage because they want more of a ready system. So basically now you know like how understanding these TRL levels helps you in a way, and you can identify how much risk is there at this stage and how much time probably it might take based on the technology to go to market. So TRLs are defined for various areas that they have different definitions, and I'm sure you'll be able to find more and more definitions if you search a bit or read a bit more about that. For example, for a drug development, the TRL could be different, as I mentioned earlier. For making an agricultural device, it could be different. For making an engineering device, it could be different. But the overall concept remains quite similar. It's how far it is actual use or actual market use. Now, there's also a term called manufacturing readiness level. So manufacturing readiness levels basically define understanding in terms of maturity of the manufacturing processes or manufacturing technologies. So one is that you have a product. For example, I have a car. Now, car is a product, but now we're talking about a factory. So how ready the factory is to produce that car. So that's where we understand the manufacturing readiness levels. And again, as the innovation development happens in terms of technology readiness, similarly, parallelly, the industry also has to work on manufacturing readiness. That okay, now we're developing the technology, but are we also ready to kind of scale up the technology in terms of manufacturing? How fast we can manufacture, how many units we can manufacture in a month. So manufacturing risk identifications and management generally begins at earlier stages of technology development. And as generally people say that once you reach a TRL level of 3, when your basic and applied research is done, then when you start developing the product, you also start parallelly understanding how you will be able to manufacture this product once the product is ready. So MRL assessment should also go through the TRL life cycle. So
This is just a quick slide and I won't take too much time on MRLs actually, just to give you a glimpse of it. So here it's compared to the technology readiness levels. So for example, you see in the reddish colored bar, the technology readiness level, and then the graph shows it there. And in the green ones, lower to that, you see a manufacturing readiness level. So again, like the way we do TRL 1, 2, 3, at the manufacturing readiness levels 1, 2, 3, it's more about research that you know that, okay, manufacturing concepts are identified. So while the product is being developed, I parallelly am getting ready to have my things ready to actually manufacture it also. So be it 3D printing. Hello. Okay, sir. I have muted, sir. Sorry. Dear participant, if you have not any query, then please mute yourself. During interaction, you can unmute yourself. Please. Yes. Sir, you will continue, sir. Thank you. So Thank you, sir. again, as I was mentioning, like manufacturing readiness levels. So by the time we reach a manufacturing readiness level of 4, we identify that the manufacturing feasibility is there. We can probably have a supply line. We can have an automation also probably. So at least identify the processes. While we haven't done anything as of now, but we just identify what processes will be required to manufacture it. Now, when you reach to a manufacturing readiness level of 5, then you identify the cost drivers of it. For example, your system is getting closer to its actual shape. So you also identify what will be the cost drivers, what components are more costly, or manpower is more costly, or it's your supply chain which is lengthy and more costly, where exactly how many resources are required and all that. So you are doing producibility assessment, and you're also doing identification of cost drivers, and the manufacturing processes are right now at an emerging stage. Now, when you're reaching to a manufacturing readiness level of 6, then your manufacturing processes demonstration may start, and your cost drivers are analyzed. Now, initially we're just identifying, but now you're at a stage where you're analyzing them, how exactly it could be changed, what improvements could be done, and you start getting your equipment in a relevant environment that, okay, this is the equipment that I need for production. Now at MRI level of 7, you'll reach more close to a production representative environment. So your manufacturing processes are being developed now. You're putting everything together. Producibility improvements are going on. You're doing your trade study, and you're also doing your supply chain management. So you also have to manage the supply chain, which also is a part of the manufacturing readiness level. So where are you sourcing your raw materials from? Are you easily getting the raw materials? What are the vendors? What are the risks in the supply chain in terms of getting the raw material? For example, recently we heard about the semiconductor shortage, and a lot of smartphones, cars, and all the production was delayed. So that's kind of a challenge which you get in the manufacturing readiness. So if there's a supply chain disruption, so in the manufacturing readiness, you also see how you prevent yourself, or how to protect yourself and build a robust system so that these disruptions in the supply chain has minimal impact on your overall production. Now, when you reach a TRL level of 8, then your pilot line demo is ready for a low rate initial production, which short form is written LRIP. So the process maturity is understood at this stage. All the materials are ready for low rate production. Manufacturing process is proven. The supply chain is stable now, but it's still at a smaller scale. Now, by by MRL level of 9, your low rate production is robust now. You are able to do it without any troubles much, and now you're gearing up for fast rate production. So at this stage, you have to think how the manufacturing processes are operating at target quality, cost, performance, and supply chain is meeting your lead times.
When you reach to a manufacturing readiness level of 10, you work at a lean system and with a fast rate production. So what I mean by a lean system is that with limited resources, with maximum automation, with all the processes in place, with how low resources, you can actually put a maximum production output. So we understand like Six Sigma production principles are there where you understand with whatever lower resources, it's more about managing processes well. You're meeting or exceeding your cost, schedule, and performance goals. So whatever targets you had set, you can actually meet them up. So this is more in terms of being ready for manufacturing. And this is again like, so as we developed in TRL, it's about the product's readiness, but in the manufacturing readiness level, it's about the manufacturing processes readiness. So how ready we are in the manufacturing process to manufacture it in large scale. There's also one more term called investment readiness level. So again, investment readiness levels are measured in terms of Okay, I am muting all the participants, sir. Sorry for the inconvenience. okay, so now we talk about investment readiness levels. Right. So investment readiness level is more in terms of understanding how ready a company or a startup is to be invested into. Sorry. Yeah. So at this stage, we'll understand, like for example, at what stage, what kind of investors are generally interested, and how investable the company is. So to understand this, we also understand the business model canvas. Now, most of you might have seen business model canvas in some classes or the if you do management classes or if you do any workshops related to entrepreneurship. So this is a canvas which basically defines how your business works. So you identify clearly your customer segments. For example, this generally we fill it on the right side, we fill it first, and then we fill it on the left side. So first thing is to identify the customer segment. So who is my customer? So that is the first thing to identify. Now customers could be a niche customer, which is a very particular type of product is required by only a set of people. For example, I'm making a diagnostic device. It will just required by some people who are in diagnostics, or if I'm making a cosmetic product for that matter, so everybody can use it. If you're making a mobile phone on a laptop, so everybody can use it. So at this stage, you clearly identify what is your customer segment. Then you also define your customer relationships and channels, which is more in terms of how you reach out to the customers, how these relationships work. And you identify your revenue streams also. So where the revenues can come from, right? And then you start filling it on the left side. So you identify now in terms of names, who are the key partners, how you're going to work with them. You list out your key resources and the key activities. Sorry, I'm just getting too many phone calls. Yeah. So you list out your key activities and resources that will be required for you during doing this business. And this is not just an identification, but it's more of like actually having the names of them. And in between somewhere you define your value proposition, like how exactly your thing is better than others, what value you bring to the customers. So that has to be clear. And the cost structure of the product. So when you define the cost structure, everything comes in, right from the raw material supply to right from the cost of the raw materials to the cost of manpower, to the cost of facility, to the cost of the supply chain. So all these you have to factor in, even the costs of warranties and all, if you give any warranties, or if there's a service involved, free service for a year. So everything consolidated, you come up at a cost structure that, okay, this is what I need to make this product.
So the way you calculate it generally is that, okay, I can make say 1,000 products in a month, and this is my monthly expenditure on all my aspects, be it my rentals for the facility, electricity, people, salaries, and all that, the raw material costs and all. So you can say in a month, if I say that this is my monthly burn rate, or this is my monthly requirement of cash, and this is my final. So if you make 1,000 products and you're spending say 10 lakh rupees, then the per product cost of manufacturing is say 100 rupees or 1,000 rupees. Now over that you also define your cost structure in terms of the selling price. So again, like you have to keep enough margins for future R&D, you have to keep enough margins for different things. So all that has to be defined. Now, just taking reference from this, now we actually need to understand how this all helps when we define an investment readiness level. So at this stage, you haven't done much, you have not even developed the product. You're thinking about a solution or a product. And at this stage, when you're talking about the product, or at least doing some initial studies, for example, you're at a tier level of 1 or 2, when you're just understanding how this concept works, how can I solve this problem. At the same stage, you also should be filling your business model canvas. It's called the first pass of the business model canvas. So at least you, in your thoughts or with some background and with some discussions, at least fill the business model canvas based on your current understanding. So it's a first pass, right? So at this stage, when you don't have a product, it's more of a concept and you're just kind of putting raw ideas on a business model canvas, what all you will need. So at this stage, there's no investment directly. I think it's difficult to get investment at this stage because you're not ready yet. Now, when you reach investment readiness level of 2, then you start doing a market size and competitive analysis. Okay, I can solve this problem, but let me see who all are there who are solving these problems. So what are my competitors doing? So it could be similar kind of products, it could be even different products, but they work for the same kind of solution. So for example, if I talk about travel, so uh, I can take about an internal combustion engine scooter, or I can take a e-scooter. Now the competition for e-scooter could be other e-scooter manufacturers also, but the competition currently is also internal combustion engine manufacturers. So it could be similar segment, or it could be a different segment which is still solving problem of the people for commute. Or your competitors could even be the cab aggregators. Your competitors could either be the public transport also. So how exactly you put forth a good value proposition? So you do analysis how people travel right now, and why do they need an EV if they need it, and how exactly it will help them. What will be the overall cost of commute, time of commute, and all that. So based on that, probably you can make out a competitive analysis. I'm just giving very general examples for understanding. At IRL 3 now, your problem solution validation comes in. So you understand the pains and the gains and what job are to be done. Okay, at a level of investment readiness 4, it's actually when your product starts coming into shape. So you have a prototype or a low fidelity minimum viable product, and you have talked to a few people and got some good reviews. So at this stage, when you start building something, you can get some funding from friends and family. But generally at IRL4, it's more friends and families because the product is not validated much yet, and you just started to build it. It's at IRL level of 5 when you validate the product and market fit. So at this stage, you reach an evidence that your product and services are creating the customer value and gaining tractions in the market, and people need them. So when the product is ready, people start doing some trials with it and they understand, okay, this product is required. At this stage, you reach a IRL level of 5. So till IRL 1 to IRL 5, you don't easily get investments. And even if you get, it's more friends and family stages. But now these days, I think right from a stage where you start building something, government funding is available, like at IRL 4 or 5, I'll say, or TRL 3 onwards, I'll say.
between TRL 3 and 7. Then you reach a little ahead of the curve now. At IRL 6, actually, you start becoming investable. So at this stage, you've validated the revenue model, or you call it the right side of the canvas. So how your revenues will flow it, how much revenue will be from the sales, is it a B2B market, is it a B2C, who would be the right customers. That there can be products who are kind of that can be sold to existing industries, or you can just work a little more and sell it directly to customers. So that is also possible. So, but you have to define your revenue models and validate them. So at this stage, angel investors could be interested to invest in the company. Then at IRL 7, you actually reach a final prototype, or you can say a high fidelity minimum viable product that can be actually be used by people if they start using it. So after that, you reach to investment readiness level of 8, which validates your value delivery, and you also kind of complete the left side of the business model canvas. And again, I mean, as you grow further, as you get more and more metrics, you understand the average selling price, monthly cash burn, your revenues start coming in, your MIS sheets start filling in. So at that stage, obviously, then VCs and others will also start investing once the customer traction comes in. So while I've defined it in a very crude manner, haven't gone too much into deep specifics, I've just talked very superficially how these things can actually help you. And so all these levels are basically to understand. And again, then there are like more and more definitions. So you can use different definitions at different stages. Right. Now, just to conclude, we'll just understand how these readiness levels help. So as I was mentioning earlier also, like once you know how to define a technology readiness level, you can easily make a knowledgeable person understand, who also knows some definitions of TRL, that at what maturity stage it is and how the outcomes could be. And again, as I mentioned, it can also help me to predict time to market. If I'm taking a technology or adopting or even licensing, it helps me understand the risk. So while early TRL levels are higher risky stages, the higher TRLs of 7, 8 and are low risk because the product is already tried and tested. You can also understand the impact on the development schedule and cost when you know TRLs. Also, in certain applications for funding and technology transfers, it's important to mention technology readiness levels, and these are used for assessments. And the best use could be concurrent development of manufacturing and product development and the manufacturing process development, as we saw in that chart that people are comparing the technology readiness level with the manufacturing readiness level. So that's how, if you understand what the technology readiness levels are. So if you tell me something, okay, I'm developing this and I'm at a TRL level of 5. So I'll be able to understand, okay, fine, this much work has been done and at what stage you are right now. So that gives a very quick understanding. There are other measurable levels also in production. So there are integration readiness levels where when we integrate technologies to existing processes, then integration readiness levels are there. So also used quite often in defense, where you have a fighter plane, for example, and a missile which is made by another party, not the fighter plane manufacturer. So then we see how easy it is to integrate, or how ready it is to integrate to your system which you're already using. Your system readiness, so that's more of readiness of an entire system, including multiple components, multiple products may be working together, and also about your supply chain readiness. So we talked about this also during manufacturing readiness levels, but this is also a term which is being used. Okay, so I'm done with most of my talking. I'll just give you some information on some of the programs for funding in case you're interested. And I'll also give you then some examples of some products that these startups made who were working here.
So, for example, there are certain programs like a BIRAC Purge program is one. Obviously, this year's call is closed, but I'll just quickly tell you. So, people who have graduated can apply to this program, and it gives you a monthly fellowship of 50,000 rupees for a period of 18 months. Initial 6 months are spent in identifying the problem. You go to different sites, you identify relevant problems, and then you propose that, okay, this is the problem I identified during my visits, and this is what I want to build. And you'll get a year and another funding of 5 lakh rupees to actually start building something. So there are certain programs like these which are more of immersion and ideation stage programs. Then there are certain programs like that are at product development and validation stages. So now you're working in your lab and you're developing a technology for a particular challenge, right? So what happens is, yeah, I'll take this question just at the end of this. So I'll just quickly go through my slides, then not taking much time. There are these programs. For example, if anybody is working in biotechnology, the Biotechnology Nation Grant, it is open right now for applications. So anybody developing a prototype or a product that has any kind of application in healthcare and all, they can take leverage of this program. So I won't go too much into details of all of these, but there are these programs. Since BIG is currently open, so I talked about it, and we also can help you in this. There are also certain programs in defense, like Defense Innovations Organization's IDEX program, where these different Army, Navy, and Air Force, they actually jointly release some specific challenges. They call it Defense India Startup Challenges. These are challenges where they feel they need some improvements in their capabilities. So they ask startups and people to actually build products for them. So that gives a funding also, and you closely work with the armed forces to actually develop those products. And then there are other programs also. I won't talk too much of these, but the BIRAC BIG program I was talking about mainly because it is open right now. And then there are other investment-based programs like Nidhi Seed Support from DST, BIRAC is having seed programs, and many more programs are there. So I've just listed the programs that we are managing. Anyways, not talking about that too much now. Sorry. So I'll just give you some examples of people who are developing technologies and how these technologies later translated to products. So just giving one example, NanoClean Global. So this was a startup created by 3 textile technology students, right? What they did is they created this nano mesh through their textile technology, which can filter up to PM 2.5 particles. And it's a little different from existing mask material, which is quite thick and all. So on the right side, if you see, with this technology, these people started making these nasal filters. So these are small filters that could be worn on your nose itself. And you can prevent a lot of pollution from entering your noses. So like in Delhi and some cities where you see a lot of pollution, especially in the northern part of the country. So these people are working with that task that, okay, I cannot use a mask all the time. This was pre-COVID actually. So these small nose filters could be one where you can actually talk to people easily and still keep wearing them. And since we breathe, all the pollution could be filtered out. Now, since masks were required, so with similar technology, they were able to make N95 grade masks also. But also there are alternative use cases. For example, this mesh can be used in your AC, where this filter is placed, which we regularly clean while doing AC servicing. So if you use this mesh with that filter, your AC can actually turn to an air purifier. Similarly, you can put it on the window and you can get more cleaner air and most of the particulate air are filtered out. So with one technology, there can be multiple use cases. Again, I'm talking about Ecom Eco Solutions. So this startup started working on a technology called Zero Door. So they were initially like working on waterless urinals, and these was one of the very early startups in the country to work on waterless urinals. So it's a urinal where you don't need to flush every time because of the smell of the urine. So it's basically processed through a process and it becomes smell free and all. Similarly, since it's more of an ecology startup,
They were making portable biotoilets, they were making food waste composting materials, and during COVID, they also came up with this fruit and vegetable wash, which actually works well and doesn't require other detergent-based materials to wash your vegetables and fruits. Similarly, during COVID, a lot of masks and other products were launched by startups here. It's a glimpse of some other products. Down there in the middle, you can see Hope, which is an EV that is targeted towards delivery solutions. And most of the components in that are locally sourced, and these people are making most of them themselves instead of just assembling components, buying from outside. Down there on the left side, you can see a ventilator. Down there on the left, you can actually see a solar panel cleaner. So again, there are multiple companies working on this, but technologies vary in terms of what material you're using, how easy is it to manage and maintain. And also, similarly, there are many products. So I'll just talk about quickly, maybe the cleanser on the left top is waterless body wash and a waterless shampoo. So for example, if I'm lying on a hospital bed and I can't go to washroom to take a bath, I can just spray it on my body and wipe it off, and I'm done with my bathing. Similarly, people who are traveling in trains, or maybe soldiers who are deployed in areas, mountains, where they don't have water to bath, so they can use it. The Flex Crutch, which was made by a mechanical engineering student, but still they got a biotechnology ignition grant because it solves problem of disabled. So compared to this round tip that is there generally in crutches, this can actually be used on more and more surfaces, and it mimics your foot actually. So when you put it down, it absorbs some shock, and when you move forward, it actually propels you forward. So less energy is required by people while walking. Similarly, there are many other products on the top right. You can see it's a portable spectrophotometer that was developed primarily with the purpose to check adult trends in milk, and also it's just a palm fitting like size of a mobile phone with a more thicker version of it, maybe I would say. In the middle, you see a true HB thermometer. You might have seen these in many diagnostic labs. This was built by a student here at IIT. So there's a small test strip which is attached to it, which is a consumable item. You prick your finger, place a drop of blood, and instantly it will give you the hemoglobin content in the blood. And the strip can then be changed and can be used next. There are many other products. I won't talk too much about these. Let's save more time and discuss more on Q&A. Just I would like to thank you all for patiently listening to me. And yeah, we can discuss now. Thank you so much, sir. Now I am unmuting the participant who has several query and to ask. So we have also listed some query from the Dibyendu Mukhopadhyay. Dibyendu, can you unmute yourself? Are you here? He asked that if components are imported and they have good market potential in country of import supply chain, is also very good. If there is some disruption is there, change level of technology readiness, manufacturing readiness, investment readiness, in which way we should manage a venture. See, we could also source components and assemble. When we talk about technology readiness level, it's more from a perspective when we are developing something which is not known before. Like, oh, sorry, So we will only invite a participant to, you can text me because there are a lot of disturbance after giving permission to unmute themselves. So you can type your query here in the chat box and we will take one by one. Yes, sir. You can continue, sir, please. right. So, yes, thank you. So I was mentioning that when you actually take components from outside,
but you're working on a technology which is already known. So in that case, it's more about putting the manufacturing processes, but not the technology readiness levels. Technology readiness levels are more in terms of making new technologies and defining them. So if you already know that our system works and it works together, and you're just taking it in parts and assembling, it's a different thing. See, there are two things. One is you're sourcing components, which are raw components, but you don't still know the system, whether it works or not. So I'm still, for example, the examples I gave, where you're actually building a system with unknown things and you're trying to see whether it works or not. The second approach is that you already know a system exists and you just check where all you're getting these parts from, bringing it and assembling it together. So we're just assembling a known system. I won't say there's any technology readiness level involved because everything is already done. Everything is known. It's already at a TRL level of 9. You're just making your own manufacturing setup. So maybe you can talk about a MRL level, but TRLs may not be defined. TRLs are more in terms of making things which are not known and making it more and more ready towards a market. So that's my understanding of it. So sorry, Kumar, you can ask. Sorry. So there's a question from Anjali, I think, that do we need to change our business model based on the investors thing? So see, what happens is you have to understand the problem that you're working on well, and you define your business model canvas. Obviously, when an investor comes in, they will also guide you, help you to an extent. Initially, they'll assess you well. In their assessment, if they feel that, okay, with some support you can go through, then they'll invest in you also. And then they help you, in fact, to tweak your business model canvas in the best possible suitable manners of the market and all. So while, as I mentioned, the initial pass has to be made by you, the initial product and prototype has to be made by you. But once an investor shows interest, if they invest in your company, even if an angel investors, they will keep on guiding you and they might help you. They might ask you to tweak your business model. And that is a natural thing. And that's because they already have a lot of kind of experience, because they might have invested in a lot of startups or a lot of companies of that sector. So you can take that. So again, like, it's more of like a discussion with the investor, what all you take from them, what all you discuss with them. But yes, they can help you in this. Yeah. Next question is from Ramendra. Ramendra, I want to ask that these all process are more of product related to the startup. So anything you can suggest for the service sector? See, the investment readiness levels were actually made for the service sector only to an extent, because, or maybe you can say software companies, because there's no product as such that you're making. So I would say the product would be your readiness of the app or whatever. So for service-based companies, you obviously kind of measure the more measurable parameter would be an investment readiness level, right? Okay, so next question is from Sangeeta Saxena. Sangeeta, are you here? Okay, I am asking on behalf of Sangeeta. So, and what would be a good strategy in supply chain management for manufacturing the product which have long gestation period? See, supply chain management and gestation periods are two different things. So the way we understand gestation period is more in terms of She extend when. his query like creating a startup for aerospace and shipbuilding industry. Yes, understood. So see, uh, the gestation periods are more in terms of the readiness of the product itself. So it comes from the technology readiness. Now, if you talk about an aerospace startup or a shipbuilding industry where it has to be proven and the systems are very, very complex and take a lot of time to build. Now, even in sectors like pharma and all, again, the systems
are complex because you're dealing with a body, and also there are so many trials and tests that are required before actually it can be launched in the market. So, but when we talk from a manufacturing level or a supply chain point of view, there we have to understand what components are required. So, for example, if it's a complex system, for example, you're making a rocket for that matter. So some of those components you might be able to source from other places, and you have to identify who are the component manufacturers who can supply you. Some of those might also be customized. So when you develop a product, you also customize a lot of things. So many things might not be available. What we do is we do a contract manufacturing. So some of your raw materials might come from contract manufacturing. You give them a design, you give them, okay, maybe it needs an injection molding for a plastic part, or it needs a metal molding or grinding, cutting and all for a metallic part, or maybe a fast 3D printing for some small part. So in those cases, what you give is you give them a design and then they start manufacturing it for you. So for components that can be readily sourced or maybe have to be imported, there are different aspects of supply chain to be thought about. But for some customized things, there are different aspects that you have to give them the design, then how robust their processes are, what is the quality control they are having and all that. So a lot of things are there. I think once you start talking about that further. Okay, thank you, sir. The last question is from the Sauri Kumar. He want to ask, sir, if we see here, the problem is that rich people will be obviously going toward the big brand like Raymond, Louis Philippe, Calvin Klein, and why would they buy a new product? I wanted to say if we can build a business model for B2B, like the company can provide fabric to the big brand and they will provide awareness to their customer, and that may be a better way to mass the new technology product. Should I repeat, Okay, sir? so it's more about brand building actually, I would say, if you talk about the big brands, but again, it's how disruptive a technology you bring in. So while there were the Raymonds and Louis Philippe's of the world, but again, something like a Decathlon can come in and still sell it to people. And obviously, it's about the segments also. For example, the ones you talked about make formal clothings, but there can be new brands who can come up with, say, now these days you have antimicrobial fabrics also, which are having property that uh, fungus or bacteria may not grow onto them, or even if you spill something over it, it can be washed very easily. So a lot depends on the functionality also. So I would say that, see, obviously there are brands, but startups thrive on innovation and IP. So for example, you bring in something in the market. For example, I think some of our startups are working on to smart textiles which can do different functions, and I won't list down them right now. But if you create an intellectual property, and if a startup is having an intellectual property, you file a patent on that, and if the patent is granted, you can actually even stop the bigger brands from working on that or maybe launching similar products like that. So it's more about innovation. The second thing is brand building. So brand building also comes a lot from the market outreach, your advertisements and all. Even smaller companies sometimes can do very creative advertising and reach out to a niche uh, customer. So for example, if a business person might buy a Louis Philippe or a Calvin Klein or something, there might still be customers who might be wanting similar quality of fabric at lower price. And if you do marketing well, I think you can still crack those things. Okay. Sir, very informative. Thank you for very informative lecture, sir. Sir, I have one query because I am heading the innovation cell here in Galgotia University, and I am facing problem to motivate the student related to the startup and entrepreneurship. So, sir, kindly suggest me any idea how we can motivate the student, because we have a Right. So students of 15,000 plus student, but when we organizing the event, there is only 200 or 300 student is participating in that event.
I understand. Right. So, see, there are multiple things that could be done to create interest among students. So, sometimes there are mature ecosystems. For example, we at IIT always talk about innovation, and you may be surprised to know that there are almost close to 1,400 companies that have been built by alumni, students, faculty members of IIT, and almost like 1,100 companies are active right now. So, it's about the whole ecosystem. See, the important things are that one is to inculcate a problem solving ability in students, also to make them more aware of their surroundings. So, uh, you can give them examples of some good entrepreneurs, maybe also call some of the successful entrepreneurs to talk to the students and motivate them. But the most important thing is to identify right challenges for students. Even if they start small, they can start at a community level or a college level or their village and town level and see what all problems are being faced by people, and can they come up with something to solve those problems. See, very small examples like service industries like Ola and Uber. So somebody thought that, okay, I'm not getting a taxi at this point of time. It's late in the evening. How good it be if I just have my mobile phone and can call a taxi easily or have access to all the available taxis nearby. So they thought, okay, this is a possibility and this could be built. Why not we build it? So similarly, you can identify a lot of problems and you can start building solutions for those. Yes, sir, So because I have also done a PhD from IIT BHU, and there is a very good incubator in right. IIT BHU also. So, Anjali want to ask some question, and Ramendra, you can unmute yourself. Ramendra, Yes, yes, yes. yes. Uh, Mr. Sutosh, just, I mean, I have heard and it sounds quite interesting to me. But only thing is because I am novice in this line, I am into HR consultancy and we recently started. So, I mean, what kind of help that I get from you? So see, in Because HR I could consulting, see it's more of a product based. And you see, since yes, yes. ah, So in sorry, sorry. consultancy, consulting is a service-based Right, industry. right, Again, you don't have to develop a product or something. right, It's more of like that. See, an incubator can only help in terms of two things. One is improving your business models in right. case there's any possibility. The other thing Okay. is providing you linkages where you can have your business growing. Mm-hmm. So while when we talk about products, it's an entirely different thing. We provide facilities, lab infrastructure, and Right. faculty members help in making the product and all. But when Mm-hmm. it's more about the service, then it's basically in terms of improving the business models and some connects. Now, if it's a Mm-hmm. very innovative HR thing, maybe you're trying something very new which nobody's doing, uh, or making an app which actually helps people. Like a lot of people, a lot of these things people are actually doing. For example, understanding not just from a perspective of their academic qualifications, but a personality perspective, an aptitude perspective, Mm-hmm. and all that. So people are building apps that kind of score on all these parameters, and then HRs can use those as an overall Okay. parameter while they're doing hiring. So see, I mean, obviously, like more and more data, more and more pointers could be built into that. But if there are those kind of solutions, probably you can get some small funding from MIT, Ministry of Electronics and Information Technology, or maybe reach out to investors if it's a good business case. So that you can also garner some funding. But obviously, in terms of product development, it's basically an app which Right. any student can also help you in building, whoever is learning coding and all. These days, even like school kids are doing. So that could be outsourced Okay. some part of it, Okay. the app Okay. building part of it, as long as you understand the business well. Mm-hmm. Okay. Uh, Okay. Okay. Thank you. Thank Anjali, if you want to ask your query, then you can Yeah, unmute. yeah, definitely, sir. I just wanted to ask, after our TRL level, before going to the MRL level, do we need investor? Because sometime I'm basically a PhD from ICT Mumbai, so I'm a basically research officer, wherein we develop a lot of
intermediates. For making them up to the manufacturing level, it really become difficult to go to those pilot levels. So so do we have to go for the pilot level at our expenditure, or do we need to go for the investor before we start those things? See, a lot depends on what exactly you're making. For example, if we talk about traditional businesses, like you say, somebody opened a bakery or somebody opened a restaurant. These are traditional businesses. So you put your own investment initially, and you know that okay, it'll run, at least some people start coming, and then you build a brand over that. When we talk about product development, it's a little different. Even if you talk about biotechnology or other industries, so there, what happens is if it's a novel product, nobody else is selling that, and if Yep. it is felt that okay, this thing can actually solve the problem, Yeah. then there's no dearth of funding actually, as long as you present it well. So Okay. there are very early stage programs like Nidhi, BIG, and others, which fund you where you are developing the prototype. So you have done some experiments and you know that it's feasible. Now you want to Yeah. build a product. So there are Yeah. grants and funds available, some grants, some investments available for actually building those. And also there are certain programs available where it helps you to do validations and all. And once validations are done, then you can actually then at that stage you can reach out to investors, because when investors see a validated product, then they are quite interested, and then at that stage you can actually raise some investment also. It also depends a lot, as I mentioned very early in the, that it depends on the nature of the business overall. So Yeah. for businesses where you know how much investment is required and it's a straightforward thing, it's fine. But in certain things where a lot of market validations, maybe sometimes product validations, trials, and all certifications are required, there obviously you cannot put too much of money. But if it's a novel, innovative product, you can get funds from the government and from investors. So at the university level, where we go for the investor, this investment of these things, because You again, can write an email to me mentioning what you're developing and at what stage it is right now. I can okay, specifically then guide you like what would be a relevant opportunity for you in terms of funding. okay, definitely, okay, Okay, thank you so much, sir, once again. And kindly accept a token of love from the Galgotia University Innovation Center. Yeah, thank you, Dr. Gaurav. Thank you. Yes, thank you so much, sir, for the interactive session. Sure, thank you. So, dear participant, um, our speaker is joining soon, Dr. Sanjeeva Kumar Majumdar, and we will send the feedback link after the completion of the second session. So please wait for the 2 minutes while our speaker is joining.
अब मेरी आवाज आ रही है क्या वहाँ पे? ठीक है। Okay, so very warm welcome to our second speaker, Dr. Sanjeeva Kumar Majumdar sir. Thank you so much, sir, for accepting our kind invitation and grace this occasion. So let me introduce first. Dr. Sanjeeva Kumar Majumdar is working as manager in startup activities and intellectual property division of National Research Development Corporation, New Delhi, which is an enterprise of Department of Scientific and Industrial Research under the Ministry of Science and Technology, Government of India. NRDC was created with the mandate to promote and commercialize the indigenous developed technology emanating from the various research institute, university, academic institute in the country. Dr. Majumdar has more than 15 years of valuable experience in the field of IPR. He is also a member of Ministerial Board Secretary of Startup India, initiative of DPIIT, Government of India since 2016. He is also coordinator of IOCL Startup Scheme Project Monitoring Committee. He is also coordinator for NRDC Incubation Center at NRDC New Delhi. He is also coordinator of NRDC on contest of demonstrating innovative prototype for a startup, an annual award being showcased and conferred during the Innovate India program of NRDC. He has expertise in conducting patent search and have been dealing with new patent application received by the NRDC for patent assistance and prize award. So he's also been involved in prosecution of patent application from filing to grant, liaison between inventor, institute, attorney, and patent office. He has organized more than 30 workshops and seminar of IPR awareness across the country. Prior to joining the NRDC, he has worked with Professor Anil K. Gupta at National Innovation Foundation of India, Ahmedabad, where he worked for the grassroots innovator and traditional knowledge holder of the country. He has also worked at Indian Council of Medical Research, New Delhi. So welcome our speaker. Over to you, sir. Sir, you can sir, you are muted. Okay, so somehow speaker is left. So now I'm connecting. Sir, you are muted. Mayank, am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Yes, yes, you are. Okay, okay. I'm just connecting with Sanjeev, sir.
अभी आ रही है सर? ओके। लेकिन आप अनम्यूटेड हैं। आप अनम्यूट करके एक बार बोलिए सर। हेलो जी बिल्कुल आ रही है सर आपकी आवाज। जी, ये ओके presentations अभी कितने लोग अटेंड कर रहे हैं? सर अभी तो Sir, 169 है सर। around 170. यस सर, यस सर। जी सर, ओके सर। In meanwhile, any participant have query related to startup and functioning of IIC, then you can ask. Here Mayank is also there. Mayank is a IIC student coordinator and he will help out related to IIC activity and functioning. He is also owner of 2 startup. Anyone? Good afternoon, everyone. Hopefully, Good my afternoon, voice sir. is audible. Yes, sir. Yes, sir. Your voice is audible, sir. Gaurav sir, is my screen is visible? Not yet, sir. If you are facing any difficulty, then you can send to me. I will share your Hello. PPT, sir. Yes, sir. If you are facing any difficulty, sir, for the sharing, then you can send or WhatsApp me. We will share your PPT, sir. Your PPT is not visible yet. Hello. Yes, sir. Yes, sir. सर आपकी आवाज आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है उधर? सेकंड यस सर, और यस सर, स्क्रीन आ आपकी रही वॉइस आ है? रही है सर। आपकी आवाज इधर नहीं आ रही है स्क्रीन में, मेरी टीम पे, लेकिन मेरी आवाज शायद जा रही है आपको। यस सर, यस सर। हेलो, ओके। एंड क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? मैंने स्क्रीन शेयर किया तो Screen is not No, visible. sir. No, sir. No. ओके। ओ सर, सॉरी रंजीत, सॉरी 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 सॉरी। जी जी, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? मैं आपको नहीं, मैंने शेयर किया हुआ है लेकिन ये दिख नहीं रहा है। बैड नेटवर्क क्वालिटी। ओ, अब मैं समझ गया, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मैं करता हूँ।
Am I audible, sir? Hopefully. Yes, correctly. Okay. Thank you so much, It was sir, for network problem. accepting Our Wi-Fi that system kind invitation. just connected over mobile, so now Okay. it's everything is okay. Okay. Thank you. Thank you, There sir. are some Thank you so much. firewall and security issues now that Yes, sir. that are good for use, but sometimes it create problem also. So I could not connect with you. I'm sorry to all participants. Sorry to all participants, those who were waiting for me. Myself संजीव मुजुमदार, मास्क हटा देता हूँ. अब तो कोई है नहीं, हम और आप अपने सामने बैठे हैं. Yes. मैं संजीव मुजुमदार, सभी का जो है कि गुड आफ्टरनून. सबको दोपहर के बाद जो है कि हमारी बात हो रही है और हमारी बातचीत और आपके लंच के बीच में शायद गैप होगा, तो लंच जल्दी करेंगे, हम सब करेंगे. बातचीत करने के लिए गौरव जी को धन्यवाद, मीनाक्षी मैम को धन्यवाद. गलगोटियाज में मैं शायद आज तीसरी या चौथी बार आज आया हूँ. यूनिवर्सिटी में भी आया हूँ, कॉलेज में भी आया हूँ. आज यहाँ पे हम लोग वर्चुअल मोड में मिल रहे हैं. फिजिकली तो हम शायद एक आध लोग आप जो पार्टिसिपेंट्स उनसे मिल चुका हूँ ऑलरेडी. फिलहाल बात करते हैं. आपका फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो चुका है टीआरएल पे, तो कंटिन्यू करते हैं. सभी को जो है कि ऑलमोस्ट ऑल पार्टिसिपेंट्स दोज अटेंडिंग, दे आर अवेयर अबाउट देयर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट साइकिल एंड दे नो दैट कि व्हेन दे हैव टू डू दैट देयर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वेरी मच रेडी फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं सभी को, शायद बिल्कुल इंसाइक्लोपीडिक नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है. हम सब जो है कि वी एट होम, मतलब कि हम घर पे घर का हम जो खाना खाते हैं और एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, और मतलब कि सेम इंग्रेडिएंट सेम, अगर कॉमन कभी आप देखें कि सेम इंग्रेडिएंट की टिफिन आ गई दो दोस्तों के घर से, लेकिन दोनों के घर की सब्जियों में उस टिफिन में उन्हीं चीज़ों का टेस्ट अलग होता है. तो सिंपल सा मैं हमेशा कहता हूँ कि एक हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है एंड वे ऑफ प्रैक्टिस है कि विद सेम इंग्रेडिएंट्स वी डू डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन एंड हमारा जो है डिलीवरी फाइनल एंड प्रोडक्ट जो है कि कंप्लीटली डिफरेंट होता है विद सेम इंग्रेडिएंट्स. सो द बेसिकली मैं इस एग्जांपल को इसलिए दे रहा हूँ कि हम चीज़ों के बारे में, रेसिपी को पढ़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन जब उसको परफेक्टली इम्प्लीमेंट करना होता है देन आवर स्किल्स वर्क. जस्ट लाइक इन रेसिपीज, व्हेन आपको जो है कि एक मिल गई कि ये सिंपली अगर लिखा हुआ कि आलू गोभी की सब्जी है, लेकिन जब आप उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं रिफाइनमेंट आपके हाथ में होती है. रेसिपी बुकलेट किताब में भी छपी होती है, मैगजीन में भी छपी होती है, न्यूज़पेपर्स में भी आती है, लेकिन वो देख करके, एंड अभी जो हमने कोविड टाइम से यूट्यूब में भी वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे कुक शोज देखे हैं, तो आपने देखा होगा कि जो कुछ भी सीखा उसके आप एक्सपेरिमेंट बाय एक्सपेरिमेंट अपने आप में रिफाइनमेंट लाते हैं. तो बेसिकली एग्जाम्पल देने का पर्पज ये था मेरा कि टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, पेटेंट पब्लिश्ड है, पेटेंट के अलावा रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश्ड है, आपको एक नो हाउ डॉक्यूमेंट भी मिल जाता है, बट फिर भी कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम टेक्नोलॉजी ओनर इज वेरी मच रिक्वायर्ड. उसके लिए मैं बता रहा था इस एग्जाम्पल को. बाकी लोग मुझे माफ करें जिनको ये एग्जाम्पल बुरा लगा. तो गौरव जी शुरू करते हैं. शुरू से ही मैं प्रेजेंटेशन को शेयर करता हूँ. क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? सर अभी तो नहीं आई है. अब शायद आ गई हो. नो सर. Hopefully it is now. I have shared. थोड़ा टाइम लगेगा, रिले है. Yes sir. Okay. It's visible now. No sir. तो फिर भी जब तक आता है तब तक हम बात करते हैं एक्सपर्ट्स में से. एक्सपर्ट्स अलाउड है अपने आप को अनम्यूट करने के लिए ना कुछ लोग? Yes sir. Yes sir. Yes sir. All Okay. participants can तो unmute themselves. those who are participating here, क्या आपने कभी एनआरडीसी का नाम सुना है पहले कभी? फैकल्टी को छोड़ करके मैं बात करना चाहूँगा. Anyone, have you ever heard about the name of the NRDC and you have any experience with NRDC? किसी का भी इंटरेक्शन रहा हो या कभी किसी ने देखा हो NRDC का नाम कहीं पर, अगर कोई बताना चाहे तो? हेलो जी हाँ, बताइए. मैंने एनआरडीसी का नाम सुना था और इसमें जो है कि जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है इनके ऊपर स्टार्टअप्स के फंडिंग, और ये एक तरह का डेवलपमेंट, स्टार्टअप डेवलपमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफ़ी दिन पहले से, मतलब ये काफ़ी समय से ये काम कर रही है.
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बात सुनी है। चलिए मैं एक एग्जांपल सिंपल सा देता हूँ। हम और आप जब हम छोटे थे बिल्कुल, या फिर हम अपने पेरेंट्स से भी अगर बात करें तो सबके लिए एक हिस्ट्री की चीज़ है कि अमूल स्प्रे दूध, अमूल स्प्रे जो मिल्क है, जब पाउडर्ड मिल्क नहीं हुआ करता था, वेरी फर्स्ट टाइम इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, एंड डॉक्टर वर्गीज कुरियन का प्रोजेक्ट था वो, जब उन्होंने अमूल आनंद में खेड़ा कोऑपरेटिव इस्टेब्लिश करा था और बहुत सारा दूध उन्होंने इकट्ठा किया कोऑपरेटिव के थ्रू, दूध की सप्लाई के लिए एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जो कुछ भी उनका प्लान था उस समय। तभी उनका एक प्लान था, विजन था कि मिल्क को पाउडर फॉर्म में लाया जाए। तो उस समय जो हमारे फर्स्ट चेयरमैन थे कस्तूर भाई लाल भाई, कस्तूर भाई लाल भाई का नाम आप भी सुनेंगे, जिन्होंने आईएम बनाया, आईएम अहमदाबाद बनाया। तो उस समय के इंडस्ट्रियलिस्ट थे काफ़ी अच्छे, उनके और वर्गीज कुरियन जी के साथ में बातचीत करके खेड़ा मिल्क प्रोड्यूसर्स को हमने टेक्नोलॉजी लाइसेंस करी थी 60s में। तो उस समय जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी थी, उसके बाद अमूल स्प्रे मिल्क आया, एंड अभी तक स्प्रे ड्राइंग मिल्क टेक्नोलॉजी वही यूज होती है। और आप जो अमूल स्प्रे दूध आप डब्बा लेकर के आते हैं, एक रेड सा टेडी बियर बना हुआ, और काफ़ी लोग जानते हैं कि उसका टेस्ट कितना यमी था, और आज भी जो है कि फील करते हैं वो अभी भी है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो अभी हिस्ट्री में, अगर आपने आसपास अगर आपने ब्लू कलर का सोनालिका ट्रैक्टर देखा हो, वो टेक्नोलॉजी भी एनआरडीसी ने ही टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइज करी है। और जब आप वोट देने जाते हैं एनी टाइम, अभी इलेक्शंस होने हैं, उत्तर प्रदेश में होने हैं अभी रिसेंटली, वोट कास्ट करने के बाद आपको जो है कि इलेक्शन के ऑफिसर्स जो है कि आपके इंडेक्स फिंगर पे ब्लू इंक लगा देते हैं। दैट ब्लू इंक जो है कि वो एनआरडीसी की टेक्नोलॉजी है। प्राउडली वी से ऑलवेज कि मे बी यू नेवर हर्ड अबाउट द नेम ऑफ द एनआरडीसी, बट वी प्राउडली से दैट कि वी टच्ड एवरीवन, every valid citizen of India who is a valid voter, and whenever they have casted vote, they got a mark from the NRDC ink. So हमारी मतलब कि पहुंच हर जगह पे, हम सब जगह पहुंचे हुए, सबसे मिले हुए, बट शायद नाम नहीं जानते हो, क्योंकि तो इलेक्शन के प्रोसेस में हम तो उसमें नहीं पता होता। दैट इज ए वेरी सेफ इंडेलिबल इंक टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय CSIR लैब NPL हियर इन दिल्ली ओनली, इट इज नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। एंड ये टेक्नोलॉजी को हमने उस समय कॉमर्शलाइज करी थी मैसूर पेंट्स एंड वार्निशेस को। सिंगल लाइसेंसिंग, वेरी एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग एंड वेरी एक्सक्लूसिव सेल्स आर आल्सो, इट इज बीइंग सोल्ड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड वही इसे यूज करते हैं। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन तो नहीं दिख रही है सर अभी। मैं फिर से क्या अब दिख रही? नाउ इट इज विजुअल सर। हाँ, तो कुछ प्रॉब्लम था शायद। जी सर। अब विजिबल है? यस सर, यस सर। मुझे भी दिख रहा है कि प्रेजेंटिंग, तो कुछ शायद कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। सो ये मैं बता रहा था, टेक्नोलॉजी जो है कि जो हमने पास्ट में लाइसेंस करी है, अमूल बेबी फूड, आज एक सेशन भी चल रहा है इसके लिए, CFTRI मैसूर, CSIR हेडक्वार्टर्स एंड दिल्ली एंड NRDC का एक कॉमन जो है कि आज आफ्टर द 80 years 80 टेक्नोलॉजीज ऑफ CFTRI चल रहा है। तो वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड चीज, मतलब कि हमने जो है कि बहुत किया था। तो एक प्रेजेंटेशन चल रही है, सुबह 10:30 बजे से चल रही है डिस्कशंस। इसी तरह से CSIR की CMERI जो सोनालिका ट्रैक्टर के रूप में आप देखा होगा, या आसपास में देखा होगा स्वराज ट्रैक्टर्स। इस तरह से इलेक्शन कमीशन की इंक भी मैंने बताई। श्री चित्रा तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज है त्रिवेंद्रम में, उनकी डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी थी हार्ट वाल्व एंड ब्लड बैग्स। जो ब्लड बैग्स जब कभी आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक प्लास्टिक के बैग में ब्लड जो है कम कलेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद 2-3 और प्रोडक्ट बना करके उसको जो है कि बाद में ट्रांसफ्यूजन के लिए अवेलेबल किया जाता है। तो जब भी HLL का मार्क देखें आपकी, HLL हिंदुस्तान लैटिक्स लिमिटेड की हीमोपैक नाम से वो ब्लड बैग है, दैट टेक्नोलॉजी इज अगेन द NRDC टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है कि पास से अभी तक 1953 से जो है कि कमर्शलाइज की गई है। NRDC एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन है शुरुआत से ही। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए जो बेसिक टूल होता है कि उसकी IP एंड जो नॉलेज है वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। प्रोटेक्टेड होने से जो है कि हम अच्छे से जो है कि हम इसको कर सकते हैं। इसलिए every time to all innovators, to all faculty, we used to say that before publishing, just think about whether there is something is can be protected by available law. तो जो भी हमारे लॉ में अब मैकेनिज्म है, शायद उसकी ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स। फिर भी एक बार मैं अभी बात करूंगा। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो हम NRDC में करते हैं, उसके जो प्रोसेस साइकिल है, मैं इस प्रोसेस पे बाद में आता हूँ। ये आपको एक साइकिल दिख रहा है यहाँ पे, कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस का। When you design, you concept a idea, you go for
सबमिशन टू दैट टू आवर रिसर्च काउंसिल, जो भी आपकी इंस्टीट्यूशनल होती है या फिर आप अपना स्टार्टअप है तो आपके अपने डायरेक्टर्स के बीच में डिस्कस करते हैं कि दीज आर द प्रोडक्ट्स वेयर वी आर थिंकिंग अबाउट टू मेक ए रिसर्च प्रोजेक्ट एंड दिस हैज़ टू बी लॉन्च्ड बाई 6 months और बाई 12 months आप प्लान बनाते हैं। 12 months के प्लान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब भी आप अपने इन्वेंशन या R&D को डिसाइड करते हैं तो उसका एक फर्स्ट साइकिल होता है जिसको हम कहते हैं टेक्निकल डिस्क्लोजर साइकिल, फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज में उसको पेटेंटिंग कहा जाए या फिर उसका IP प्रोटेक्शन जो भी आपका सुटेबल मैकेनिज्म हो। उसके बाद तो थर्ड एंड लॉन्गेस्ट फेज है वो कमर्शलाइजिंग दैट इन्वेंशन। तो पहले आपने इन्वेंशन को कंसेप्टलाइज किया, उसको सोचा कि उसमें क्या क्या डिटेल्स आएंगे, पूरी प्लानिंग करी, एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट तो उसको हम टेक्नोलॉजी डिस्क्लोजर कहते हैं। सेकंड पार्ट हो गया उसका पेटेंटिंग प्रोसेस, जैसे कि आपने उसे असेस करके प्रोटेक्शन के लिए फाइल किया एंड हाफ ऑफ द काम हमारा ये हो गया। जब आपके पास रेडी है, आपकी इन्वेंशन रेडी है, आपका टेक्निकल डिस्क्लोजर एवरीथिंग इज रेडी, यू हैव टू कमर्शलाइज दैट। अब आपको कमर्शलाइज करने के लिए या तो कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस प्लेयर के साथ आप लाइसेंसिंग के फॉर्म में आप उसे दें या फिर खुद के अपने स्टार्टअप बिजनेस से आप शुरू करें, या फिर उसके बाद जो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से जो रेवेन्यूज आती हैं उसको री इन्वेस्ट करते हैं हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। दैट इज द बेसिक जो है कि कॉन्सेप्चुअल साइकिल है और एक्सपेरिमेंटली एक्चुअली होता भी यही है। तो ये बेसिकली जो R&D की प्रोसेस की साइकिल है जो मैं बताना चाहता था। बेसिक ये मैंने तो नेट से ही करके लिया है, आप भी। Your slide is not moving actually. So you can off your camera, sir. That's why the bandwidth will be increased. So yes, sir. Now you can change your slide, sir, please. It is not moving, sir. It is stuck on a scope and process of technology transfer for academic institution. The first slide. पे ही है। Okay, sir. मैं फिर से शुरू करता हूँ। Okay, okay, sir. Now please change, sir. Visible it is? Yeah, it is visible. Sir, please change. Try to change the slide. It's running now? No, sir. It is now. Yes, sir. Moving, sir. तो मैं इसको मेनू बार में ही रहने देता हूँ, फिर शायद सही रहेगा। Okay, sir. Okay. Hopefully it's visible. Yes, sir. तो मोस्टली एवरीवन, आप लोगों ने टेक्नोलॉजी डेवलप, कुछ लोगों के है इन्वेंशंस फाइल किए हुए? Yes, sir. Okay, so in our incubation cell, sir, there are 7 startup in pre-incubation stage, and we have 7 startup in incubation stage that are dealing with the B2B and B2C. Oh, so great. So they have protected their brand name also? Mayank, have you protected your brand name? There are some innovators also here. They have their own startup. बिल्कुल, आप सभी लोग मुझसे बात कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ पूरे। अभी मैं स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन दे करके जितना हम नहीं कर सकते उतना हम आप और बात करके दूसरे लोगों को बता सकते हैं। तो आपके पास जो भी IP है, जब भी टेक्नोलॉजी आपके पास डेवलप हो जाती है, कमर्शलाइज करने के 3 बेसिक जो है कि रास्ते हैं। आइदर yourself you have to do your commercialization, या by through assignments, through selecting an agency, and by any kind of a business partnership, like आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके ही इंक्यूबेशन सेंटर में एक दूसरा स्टार्टअप है जो कि इस काम को कर सकता है। जैसे कि अभी हम देखते हैं, जैसे कि हम टीचिंग प्रोफेसर सभी लोग हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, एंड स्टार्टअप इज वर्किंग इन कमिंग अप इनटू ए पर्टिकुलर एरिया वेयर द प्रोफेसर इज हैविंग ए टेक्नोलॉजी, it can be transferred to that startup. तो इसलिए बिजनेस पार्टनरशिप either way of the licensing और franchising और kind of a joint venture और a spin off, joint venture and spin off, जैसे कि आप 2 स्टार्टअप मिल करके अपने साथ जो है कि joint venture कर सकते हैं। स्पिन ऑफ हम तब कहते हैं जब एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी अपनी किसी टेक्नोलॉजी को दे करके दूसरी छोटी कंपनी को एस्टैब्लिश करती है, तो स्पिन ऑफ हम कहते हैं उसे। तो ये बिजनेस के टर्मिनोलॉजीज हैं, जब आप सीखेंगे तो आप समझ में आएंगे धीरे धीरे करके।
जॉइंट वेंचर्स बेसिकली उसमें एक दूसरे की कैपेबिलिटीज के बेसिस पे हम जो है कि डिसाइड करते हैं कि एक के पास टेक्नोलॉजी है, दूसरे के पास फंड्स हैं, फंड्स इन्फ्यूज होती है, टेक्नोलॉजी डेवलप करके प्रोडक्ट जो है कि बड़ी कंपनी के नाम से मार्केट होती है, या फिर जिसको कि मोस्ट ऑफ द बेनिफिट जो है कि बड़ी कंपनी हो जाती है। तो जेवीज में भी अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, डिपेंड करता है कि कंपनी कितना इन्वेस्ट करती है। अभी तो आपका सभी स्टार्टअप्स का जो है कि आपका सीड फंडिंग या फिर जो है कि आपका इक्विटी फंडिंग ही चल रही होगी। तो इस तरह से जो भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स आपके होते हैं जहाँ पे आप फंडिंग करते हैं, तो आईपी एलिमेंट्स आप स्टार्टअप के साथ ही रखें। एंड टीचर फैकल्टी जब भी आपके पास टेक्नोलॉजीज हैं, आपने रजिस्टर किया, आपने जो भी रजिस्टर किया है, आइदर ट्रेडमार्क और डिजाइन या फिर आपका SICLD या फिर प्लांट वैरायटी, जो कुछ भी है यहाँ से डेवलपमेंट है, अगर पेटेंट अगर ग्रांटेड है या फिर फाइल है, एप्लीकेशन फाइल पर ही आप उसको कमर्शलाइज करने के लिए ट्राई करें। बड़ी सेफ डे इट इज़ द पब्लिकेशन डेट, उसके बाद से आप अच्छे से पब्लिश करके उसको कमर्शलाइज करना कोशिश कर सकते हैं। तो शायद आईपी के आपके लेक्चर में काफ़ी डिटेल्स में डीलिंग हुई होगी इसकी। तो 3 रास्ते हैं जो कि आप ले सकते हैं। चूंकि मैं यहाँ स्टार्टअप से ही बात करता हूँ, तो थर्ड वाला ही ज़्यादा बेटर है कि एज ए बिजनेस पार्टनरशिप और स्टार्टअप, और वही लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग जो आपका ऑप्शन है। असाइनमेंट्स एकेडमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम थ्रू NRDC हम टेक्नोलॉजी असाइन करते हैं अपने नाम से, असाइनमेंट करने के बाद फिर हम उसे कमर्शलाइज करते हैं। यहाँ पर भी जो फैकल्टी की टेक्नोलॉजीज है, अगर आप किसी स्टार्टअप को कमर्शलाइज करने के लिए राइट्स दे रहे हैं, तो आप जरूर से असाइनमेंट साइन करें। उसके लिए एक लीगल एग्रीमेंट साइन होता है, उसमें जो है कि टेक्नोलॉजी के कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए राइट्स का नाम ध्यान रखिएगा। कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन मीन्स यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी, प्रोड्यूसिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो आपकी इन्वेंशन है, उसके लिए आप राइट्स ट्रांसफर करते हैं। आप कभी भी ये ना सोचें कि आपकी ओनरशिप चली जाएगी, आपकी ओनरशिप आपके पास ही रहेगी। आप उसके कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए उस राइट्स को आप देते हैं बाय असाइनमेंट टू द स्टार्टअप, टू द इंडस्ट्री और टू द NRDC, किसी को भी जब आप देते हैं, तो उस हिसाब से आपका एग्रीमेंट ड्राफ्ट होना चाहिए। तो आप उसको कमर्शियली वो स्टार्टअप यूज कर सकती है। आईपी आपके नाम पे ही रहेगी, द पेटेंट इज ओन बाय यू। और कभी भी ये एक्सक्लूसिव नहीं करना चाहिए, आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट है। नॉन एक्सक्लूसिव इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज वे बी द स्टार्टअप, द स्टार्टअप विच इज टेकिंग द टेक्नोलॉजी हियर, या बड़ी कंपनी को आपने टेक्नोलॉजी दी और एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग आपने कर दी, उसको असाइनमेंट कर दिया, तो फिर आप उसको दूसरी किसी को असाइन नहीं कर सकते। बट always the requirement is whatever the technology you have developed, it has to go to the public use at end. तो इस तरह से करके थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। TRL पे बात हो चुकी है। हम NRDC की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस पे अगर हम बात करें, सो ये हम अपना प्रोसेस हम बता रहे हैं पूरा, जैसे कि हम करते हैं एज वी रिसीव द टेक्नोलॉजी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट और फ्रॉम द इंडिविजुअल, कि दिस इज द R&D and it has to be commercialized through NRDC now. So that first stage is that we take the assignment. Second, we go for assessing that technology, how good this technology is, and there are certain हमारे पास कुछ एजेंसी जिनके थ्रू हम जो है कि मार्केट सर्वे कराते हैं। कंप्लीट एनालिसिस के बाद ही जो है कि हम उसकी वायबिलिटी समझने के बाद उसके क्या क्या और प्रॉस एंड कॉन्स हैं उस टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने में या फिर लाने में, वो सभी बातें करने के बाद फिर हम बैक टू जो है कि इन्वेंटर को कॉन्टेक्ट करते हैं, क्या मॉडिफिकेशंस और चाहिए, क्या नहीं चाहिए। वंस इट इज ऑल स्ट्रीमलाइंड, देन वी पब्लिश दैट, अपनी इंडस्ट्रीज को हम भेजते हैं कि दिस इज द टेक्नोलॉजी वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द गलगोटिया यूनिवर्सिटी एंड इट्स वेरी प्रॉमिसिंग, इट कैन बी ए गुड प्रोडक्ट इनटू द मार्केट व्हेन इट इज बीइंग लॉन्च्ड। तो इतने सारे हम वादे करके जो है कि एक इंडस्ट्री को बात करते हैं। इंडस्ट्री जब हमें एग्री कर जाती है, तो एक लाइसेंस fees, basically the premia is being collected from there. Premia, it's the first upfront payment of the premia, premium in singular, premium जो हम collect करते हैं, that is being transferred again from the industry, and from the industry collected the fees from the industry, that is being transferred to the R&D institutions. So यहाँ पर भी जब आप अपने टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज करेंगे तो ये करेंगे, and being the startups, those who are owning, they are the owner of their patent, so this step is not required because they have their own IP, so they are going to commercialize. So into their commercialization में आपके TRL के बेसिस में सारे लेक्चर्स पढ़े हैं कि कब कब आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, like all validation studies and the certification parts, so then you can launch. So this is the process with what you follow at NRDC. That's very simple and a step by step process. Agreements are too many. पहली एग्रीमेंट हमारी इंडस्ट्री के R&D लैब के साथ होती है, सेकेंड एग्रीमेंट हमारी इंडस्ट्री के साथ होती है, एंड रॉयल्टीज वी हैव टू कलेक्ट, कीप ऑन एवरी 6 months we collect the royalty, and again we pay back
the R&D share from that loyalty and the premium to the R&D institute. This already happened, this process I have said. And the technology आपकी जो भी आपने develop की है technology, that can be having different parts. If it is a process or a product, you have to go for a patent filing. That's criteria has already been discussed for the 20 years terms you have. एंड डिजाइंस जो है कि डिजाइंस पे थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगा सभी पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे कि जब भी आपके पास कोई अच्छा एक प्रोडक्ट है जिसकी अगर उस डिजाइन में फंक्शनल पार्ट है कि इसको कैसे कैसे वो चीज़ें काम करती हैं, तो फंक्शनल पार्ट को आप हमेशा जो है कि पेटेंट्स के लिए लेके जाएं और उसके एस्थेटिक पार्ट, उसकी खूबसूरती के पहलुओं को जिसको हम कहते हैं उनको लेकर के आप डिजाइन रजिस्ट्रेशन कराएं। कभी भी आप जो है कि किसी मैकेनिकल प्रोसेस या किसी कंपोनेंट्स को लेकर के अगर हम सिंपली मैं एग्जांपल देना चाहूँ कि स्टेपलर है जैसे कि, तो स्टेपलर जो प्रोसेस जो आपको प्रोडक्ट दिखता है वो इंडस्ट्रियल डिजाइन में नहीं जाएगा, लेकिन उस स्टेपलर का लुक ब्लू कलर का है या फिर पिंक कलर का है या फिर उसका कर्वेचर्स, वो सब जो है कि डिजाइन रजिस्ट्रेशन में जाएगा। लेकिन स्टेपलर में पिन का आना और पिन का मुड़ना वो एक फंक्शनल कंपोनेंट है और वो जो है कि पेटेंट्स का पार्ट है। तो आप ध्यान रखें अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कि वेदर यू हैव टू थिंक अबाउट द पेटेंट एंड वेदर यू हैव टू थिंक अबाउट द डिजाइंस। क्योंकि आप सभी लोग ऑल द स्टार्टअप्स दे हैव देयर ओन प्रोडक्ट्स, सो डिजाइन रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब रजिस्टर करते हैं जरूर कीजिए। ट्रेडमार्क्स, एनी स्टार्टअप who are participating in this program, either they are from the product sector or from the service sector, they have to select for their brand name। जो भी आप अपना नाम सोचते हैं ब्रांड नेम है, प्रोडक्ट रेंज भी अगर सोचते हैं, अलग अलग नाम उनके सोच रखे हैं आपने, तो उसके क्लास को समझिए और उसके बाद अपने कंपनी का अलग अलग ब्रांड नेम रजिस्टर कीजिए। ब्रांड नेम्स जो रजिस्टर होते हैं ट्रेडमार्क्स एक्ट में रजिस्टर होते हैं। ट्रेडमार्क्स एज इट इज सिर्फ जो है कि आपकी ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन है, बट ब्रांड को अगर हम समझाएं तो आपके मैनेजमेंट टीचर्स ने आपको बताया होगा, ब्रांड बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना होता है, ट्रेडमार्क एंड द रेपुटेशन व्हाट यू गेन बाय द टाइम। आज अभी आप गलगोटिया में पढ़ रहे हैं, गलगोटिया में पढ़ने के लिए आने से पहले आपको किसी ने रेफर किया होगा, वर्ड ऑफ माउथ, या फिर आपका एक असेसमेंट रहा होगा कि मैं गलगोटिया में ही पढ़ने जाऊं या गलगोटिया में ही मैं पहुंचूं। सो वो एक जो डिसीजन मेकिंग में आपने जो नाम सोचा टूवर्ड मेकिंग ए डिसीजन टू एंटर इनटू गलगोटिया यूनिवर्सिटी, सो दैट वाज द ब्रांडिंग एंड ब्रांड इम्पैक्ट ऑफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी, यही है। एंड इसके बाद जब आप अपनी प्लेसमेंट्स लेते हैं, आपके यहाँ से जो आपके फैकल्टीज के मतलब पढ़ाए हुए मेंटोर किए हुए स्टूडेंट्स, एंड फिर वो जो पैकेजेस होते हैं एंड उसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ पेटेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, फिर उसके बाद वो ऐड ऑन होते जाते हैं विथ टाइम। तो बाकी और प्रोडक्ट्स आप तो खरीदते ही हैं, सभी चीज़ें आपको पता ही है कि अगर हेडफोन आप 2 साल 3 साल पहले तक हेडफोन अगर खरीदना होता था तो आप सोचते थे कि मैं सोनी का खरीदूं या फिर मैं सैमसंग का नहीं खरीदूंगा, एक हारमन कार्डन का ले लूं, या फिर आप सोचते थे कि किसी एक अच्छे ब्रांड का ब्रांड सोच रहे होते थे। लेकिन अभी शायद मैं जितने लोग अटेंड कर रहे हैं सभी के कानों में मुझे लगता है कि मैक्सिमम 90% आज आप बोट यूज कर रहे होंगे मोस्टली। यस और नो बता सकते हैं मुझे आप? तो एक इंडियन ब्रांड वेरी फास्ट कोविड के टाइम पे ही स्टैब्लिश हुई और सभी के पास है इस समय, चाहे वो ब्लूटूथ डिवाइस में हो या फिर आपका वायर डिवाइस में हो। सो स्टैब्लिश होना एंड आइडेंटिटी क्रिएट करना, इट्स ए गुड थिंग। सभी ने डिसाइड किया, आपने भी वर्ड ऑफ माउथ एक दूसरे को बताया। बाकी ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स तो डिफरेंट थिंग्स हैं ब्रांड को स्टैब्लिश करने में। तो मैं वही बताना चाहता था कि आपका काम आपके साथ साथ चलेगा। ब्रांड्स और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से किसी ने रोहित सर्फेक्टेंट्स का नाम सुना है? रोहित सर्फेक्टेंट्स, सिटी भी बताता हूँ, कानपुर। कोई आंसर? किसी को याद नहीं? कभी नाम पढ़ा भी नहीं? हेलो, नो सर, कभी नाम पढ़ा भी नहीं? जो रोहित सर्फेक्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, RSPL। यस सर, वो घड़ी डिटर्जेंट बनाती है सर। हाँ देखा, अभी सभी लोग जानते हैं। जैसे ही हमने कहा घड़ी सभी लोग जानते हैं, बट किसने बनाया वो नहीं पता। तो आपके स्टार्टअप का नाम जो भी हो, जब आप अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं उसकी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे घड़ी डिटर्जेंट पाउडर एक ऐसा ब्रांड है जो कि हम कहते हैं कि ये मतलब कि जो यूनिलीवर एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल के ब्रांड्स के बाद मतलब कि मोस्ट पॉपुलर हमारे यहाँ पे जो है कि ब्रांड है इंडिया में, हमारे यहाँ पे।
अपार्ट फ्रॉम निरमा, जो कि निरमा भी एक ब्रांड है। निरमा की कंपनी का नाम भी निरमा ही था, निरमा डिटर्जेंट भी वही है। इसलिए मैंने आरएसपीएल का एग्जांपल दिया कि अब घड़ी के नाम से तो हम सभी जानते हैं, तो इसलिए प्रोडक्ट को मेमोराइज करना एट ए पब्लिक, जो सभी लोग उसे याद कर सके। अब घड़ी ने जो अपना ब्रांड नेम सोचा, उसको आपको एनालॉजी अगर आप सोचे एज ए ब्रांडिंग, तो उन्होंने बिल्कुल वैसे ही सोचा जैसे कि हमारे चुनाव चिन्ह होते हैं, चुनाव के निशान होते हैं, कि एक ऐसा निशान जो लोग देख करके पहचान लें, सिंपली पहचान लें, और फिर दोबारा जब खरीदने जाएं तो उसी नाम से मांगे। उसमें सर्फ भी था, सर्फ एक्सेल भी था, एरियल भी था। मोस्टली ये नेम सारे सर्फ एक्सेल या फिर एरियल या फिर रिन, ये क्वाइन नेम है। निरमा एक क्वाइन नेम है। घड़ी एक प्रोडक्ट को इमेज दे करके ऑप्टिमाइज किया हुआ टू मेमोराइज इनटू द पब्लिक। सो ब्रांड्स आपको डिसाइड करने हैं। आप सभी स्टार्टअप्स थ्रू आउट द सोचें एंड जरूर से रजिस्टर कराएं अपने कंपनी के नाम को, अपने प्रोडक्ट रेंज को, या फिर अपनी सर्विसेज को। जैसे कि अगर कुछ बैंक के भी स्लोगन्स होते हैं, नीचे लिखा होता है, LIC का भी एक नीचे पंच लाइन है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो आइडेंटिटी है उस तरह से ब्रांड्स इमेज को बनाने के लिए। तो ये सभी रजिस्टर्स होते हैं ट्रेडमार्क में। ट्रेडमार्क सबसे लॉन्गेस्ट जो है कि आपका आईपी है। एवी आपकी 7 पुस्तक को ट्रेडमार्क को कंटिन्यू कर सकती है। जैसे कि हमारे पास कोका कोला, इतने सालों से कोका कोला का ब्रांड नेम कोका कोला कंपनी के पास ही है, एंड दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट विद देयर ब्रांड ओनली। एंड जब भी वो मार्केटिंग भी करते हैं, आप देखें अगर किसी क्रिकेट के मैच के फॉर्मेट में भी ये लिखा होता है। और अगर दूसरे आईपीज की मैं बात करूं, अब टेक्नोलॉजी कॉमर्शलाइजेशन में आपका, चूंकि आप लॉन्च करने जा रहे हैं, कॉमर्शलाइज करने जा रहे हैं, तो कॉपीराइट हम जनरली हम कहते हैं कि पेटेंट तो फाइल कर लिया, ट्रेडमार्क की भी मैंने बात कर ली, कॉपीराइट का क्या ऐसा इंपॉर्टेंस हो सकता है कि कॉपीराइट्स में मुझे क्यों जानना, क्यों समझना, कॉपीराइट मुझे करना ही नहीं है। कॉपीराइट तो किताबों का होता है, कॉपीराइट तो गानों का होता है, ऐसा नहीं। कॉपीराइट लॉ बहुत ही बड़ा और बहुत ही वेल इम्प्लीमेंटेड लॉ है। आप सिंपली कोई भी प्रोडक्ट का, आपने काउंटरफिट प्रोडक्ट के बारे में सुना है कभी, जैसे नकली सामान कहीं पे पाया जाना, एंड पुलिस की रेड एंड द सर्च एंड सीजर जो होती है, अक्सर न्यूज में पढ़ा होगा कि इस गोदाम में इतने का नकली सामान पाया गया। अब सभी स्टार्टअप्स ध्यान से सुने, ये जो सर्च एंड सीजर एंड नकली सामान का पाया जाना, इसके लिए जो लॉ पुलिस जो इन्फोर्समेंट करती है, ये बेसिकली कॉपीराइट लॉ में ही होता है। अब सोचेंगे कॉपीराइट लॉ यहाँ पे कैसे आ गया। प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप एक देखें, उसका नकली सामान बनाने के लिए उसका लोगो, ट्रेडमार्क जो ब्रांड नेम है वो, और उसकी पैकेजिंग, दोनों को ही कॉपी करना पड़ेगा नकली सामान बनाने के लिए। जैसे ही उन्होंने एक असली सामान की कॉपी बनाई, उस लेबलिंग, उस पैकेजिंग एंड उस ब्रांड नेम को यूज करना, ये प्रोटेक्टेड है कॉपीराइट लॉ में। तो आप अपने जो ब्रांड नेम रजिस्टर करेंगे, ट्रेडमार्क जो बनाएंगे, और आपकी जो पैकेजिंग होगी, वो आप कॉपीराइट लॉ में प्रोटेक्ट करते चलिए। साथ साथ 60 साल के लिए प्रोटेक्शन होती है, तो आपको दोबारा से एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप क्लिनिक प्लस शैम्पू की तरह से अपने प्रोडक्ट के लेबलिंग को चेंज करते रहते हैं बार बार, तो आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने जाना पड़ेगा। वो भी उनकी एक अपनी स्ट्रेटजी है कि क्यों वो चेंज करते हैं अपनी पैकेजिंग। बट अगर कोलगेट ने चेंज नहीं की है आज तक, रेड बॉक्स एंड व्हाइट फॉन्ट्स, तो वो पहचान है। तो इस तरह से करके कॉपीराइट लॉ भी आपके लिए आपके प्रोडक्ट्स को एडिशनल प्रोटेक्शन आईपी में देती है, जिससे कि आप लॉ में केस फाइल करके आपके कोई भी नकली सामान बना करके बेचना चाहता है तो आप उसे केस कर सकते हैं। और आप किसी का नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको भी जानना जरूरी है कि किसी को आप जो कि इमिटेशन ऑफ लेबल कहते हैं बेसिकली, इसमें किसी भी तरह से करके करना। तो फॉर ए स्टार्टअप ये सभी जो है कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट को डिजाइन करना, कॉन्सेप्ट करना, उसको प्रोटेक्ट करना, पेटेंट्स एंड डिजाइन से प्रोटेक्ट हो गया। बट ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स आपका जो मार्केटिंग टूल्स होगा, जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, मार्केट करेंगे एंड काउंटरफिट होने से बचाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी सारी आईपीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप करें। अभी जैसे कि मैं एग्जांपल अब लेना चाहूँगा, किसी को कोई क्वेश्चंस पूछना हो बेसिकली इसके लॉ में, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम गौरव जी? Yes, sir. So, dear Any participants, you can unmute yourself and ask your query. Can ask. So, Yes. maybe Norachak, is visible to you? This?
Sir, your slide is stucking on commercialization of IP. Oh, Yes. is this visible? Is this visible now? Yes, sir. It is visible. इट्स नौरक्षक। अगर आपको सभी स्टार्टअप्स को मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसका, लेकिन बेसिकली टेक्नोलॉजी स्टार्टअप से नहीं आई थी। देखिए मैं हमेशा इसका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि काफ़ी फास्ट ट्रैक में इसका काम हमने किया था। ये एक इंडियन नेवी ने टेक्नोलॉजी डेवलप करी, एक डॉक्टर्स जो कि खुद की प्रॉब्लम उन्होंने फील की कि जो पीपीई और जो हॉस्पिटल में उनको पहनने के लिए दी गई थी, दैट वाज काइंड ऑफ ए प्लास्टिक सीट एंड ही वाज स्वीटिंग इनसाइड द पीपीई किट. So he felt that it should be some kind of breathable, so that air can be passed through this seat, but it can be at the same time it should be protective of the virus also. So at that time, whatever the guidelines were there, ki ISO, as per the ISO 16603, he went for the testing. He developed a PPE kit material. Basically, he selected a material and he developed a complete design of the PPE kit. It was in 3-piece design, one for the headgear, one for the upper suit and lower suit. So with that design, he went. It completely stitched. It was that time in the first phase of the lockdown. It was. Now अभी हम इसको नौरक्षक अल्ट्रा के नाम से मार्केट कर रहे हैं. That's completely ultrasonic SIM now. So जब इन्होंने डॉक्टर ने प्रॉब्लम को फेस करी और उन्होंने जो है कि इसकी टेस्टिंग कराई, तो काफी अच्छा मटेरियल ऑप्ट किया था इन्होंने, जो कि सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन टेस्ट जो है उसको पास किया प्रोडक्ट ने फ्रॉम द DRDO लैब. Immediately they approached to NRDC and we filed a patent for this. The patent was filed and then immediately we filed for a trademark also, but for the brand name, and we transferred this to 6 manufacturers and they are manufacturing and selling. आज ही मैंने एक पीपी की लगभग 2 लाख रुपए की रॉयल्टी जमा की है. बहुत ज्यादा पीसेज उन्होंने नहीं बेचे थे उस समय फर्स्ट फेज में. प्री डेल्टा के पहले की जो फिगर उन्होंने दी उसमें जो है कि उन्होंने 2 लाख रुपए की रॉयल्टी दी. टेक्नोलॉजी फीस भी काफ़ी अच्छी मिली थी इन सभी जगह से, और एक पीपीई किट जो है कि मार्केट में नौरक्षक ब्रांड से है. तो प्रोडक्ट को डिजाइन कॉन्सेप्ट करना कि ये जो बनाया था इसके मटेरियल सिलेक्शन में एंड उसका पेटेंट फाइल करना, देन उसके लिए एक नाम सोचना, क्योंकि नेवी से टेक्नोलॉजी की आई थी तो इसलिए उसका नाम भी दिया नौरक्षक, और वो भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है एंड हमने लाइसेंसिंग उसी हिसाब से की है. तो प्रोडक्ट को विद इन कोरोना के फर्स्ट फेज में हमने मई जून में से एस्टैब्लिश कर दिया था. 2 months, विद इन 2 months वी एस्टैब्लिश दिस प्रोडक्ट. तो आपको भी करना है अपना इमीडिएट करके और जल्दी से जल्दी उसको प्रोडक्शन करके आना है. यहाँ पे जो कि ये नेवी की टेक्नोलॉजी थी, उनके नेवल हॉस्पिटल की टेक्नोलॉजी थी, इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन मुंबई, एंड पार्टनर्स जो है कि हमारे 6 मैन्युफैक्चरर्स हैं. आगरा में भी प्रोडक्शन होता है, यहाँ यूपी में इंडियन कार्बन कंपनी बनाती है. बॉम्बे में 2 लाइसेंसी हैं, एक का मैं डिटेल भी बताऊंगा थोड़ी देर में. जैसे कि ये स्वैप्स कोचर, ये बेसिकली फैशन डिजाइनर हैं मैम. ये कॉस्ट्यूम्स एंड अपरेल्स में कम्प्लीटली मार्केट बिजनेस करती थी, एंड जस्ट कोविड के टाइम पे इन्होंने सोचा कि कुछ और करते हैं, एंड यहाँ से इन्होंने टेक्नोलॉजी ली नौरक्षक की और वो बना करके सेल कर रही हैं, एंड बहुत अच्छी सेल हुई है इनकी ओवर द जेम ऑल्सो. सो एक अपॉर्चुनिटी यूज करना कोविड के टाइम पे, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर ने करके यूज किया. इसी तरह से आपके यहाँ पे जो स्टार्टअप्स है फ्रॉम द फैकल्टी, जो आप लोग टीचिंग कर रहे हैं या फिर आपके फैकल्टी में भी इंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपके यहाँ पे परमिटेड है. मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, शायद ये नाम आप लोगों ने सुना हो एज ए फैकल्टी में आप लोग. ये आपके पास की ही यूनिवर्सिटी है, फरीदाबाद में मानव रचना यूनिवर्सिटी, वहाँ से प्रोफेसर हैं डॉक्टर नितिन डोनिया, बायोटेक के प्रोफेसर हैं. इन्होंने एक कंपनी स्टैब्लिश करी, ट्राइको एग्रोनिका प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी. इनको फंडिंग हुई, अच्छी स्टार्टअप फंडिंग हुई लगभग 1.5 करोड़ की, प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए. इन्होंने बहुत अच्छा एक बायो फार्मुलेशन डेवलप किया जो कि फंगल पैथोजन टोमेटो में जो होते हैं उसको जो है कि कंट्रोल करने के लिए. प्रोडक्ट एस्टैब्लिश्ड है, वेरी सून अबाउट टू लॉन्च, और इन्होंने इसके लिए एक इंडिया में फाइल किया और साथ ही साथ इसको पीसीटी और पेटेंट को फाइल किया इन्होंने. सो बीइंग फैकल्टी कन्वर्टेड इनटू स्टार्टअप, ये भी एक्सपीरियंसेस हैं. आपके यहाँ से भी कोई अगर आते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं. एक और स्टार्टअप का मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, दे आर एजुकेशन सेक्टर. उन्होंने बहुत अच्छा एक नाम सोचा था, फाइन टर्म है बेसिकली, एजुकेट से निकाला है एजुकेट, डी जेट कर दिया उन्होंने और ट्रेडमार्क सोचा. तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे. शायद आपके इसमें किसी प्रोग्राम में ट्रेनिंग में भी आए होंगे ट्रेनर में, मैत्री जी या रोली पांडे जी. तो इनका भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं था, बातचीत हुई, इनका भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है इस समय. और कुछ स्टार्टअप्स के मैंने और एग्जाम्पल लिए हैं. गौरव जी कोई क्वेरीज है तो बात करा दीजिए, फिर उसके बाद मैं दूसरे स्टार्टअप्स के एग्जांपल लूँ.
Yes, sir. So you can unmute yourself and ask you if you have any query. Sir, I have one query. What is the process for the trademark filing, sir? It is Trademark filing, if the class is not happened, then IP the trademark filing. Very first requirement is that we have to think about the name for what we are going for trademark, and then we have to search for, as per the trademark law, there are certain prohibitions, like it should not be a country name, it should not use a country flag, and it should not use a map, and it should not hurt a religious sentiment. किसी के भी religious sentiment को आपको hurt नहीं करना है. तो इस तरह का एक आपको नाम सोचना है, प्रेफरेबली कॉइन टर्म कहते हैं, लेकिन कभी भी डिस्क्रिप्टिव टर्म जो है कि यूज नहीं कर सकते. any fee is also associated with एंड that? नो, आपने जब नाम सेलेक्ट कर लिया, नाम के बाद आपने उसका पैटर्न सेलेक्ट कर लिया कि आप किस तरह से उसे लिखना चाहते हैं, किस तरह से फॉन्ट होगा, किस तरह से बैकग्राउंड होगा. आप कंप्लीट एक CDR फाइल बना लीजिए, उसका एक प्रिंट हाई रिजोल्यूशन लीजिए, एंड उसके बाद ट्रेडमार्क रजिस्ट्री को आप डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं. ट्रेडमार्क रजिस्ट्री हमारे पास इंडिया में 5 हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद. जब आप उसमें फाइल करते हैं, आपकी 4,500 रुपए एक क्लास में फीस होती है, 4,500 रुपीज फीस. एंड उसके बाद अगर आप एडवोकेट हायर करते हैं कोई भी, इसके लिए एडवोकेट भी हायर कर सकते हैं या फिर ट्रेडमार्क एजेंट हायर कर सकते हैं. बट सेफ है कि आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार्टअप से खुद भी कर सकते हैं. एंड कोई भी अगर सपोर्ट चाहिए कि उसके लिए भी आपको फाइनेंस असिस्टेंस चाहिए, तो आप NRDC को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. हम भी जो है कि ट्रेडमार्क फाइलिंग स्टार्टअप्स के लिए फ्री में करते हैं विदाउट चार्जिंग एनी फीस. तो 4,500 ही फीस होती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में. आप एक से ज़्यादा क्लास भी ले सकते हैं. अगर मैं एग्जांपल दूं, एक से ज़्यादा क्लास में कोई नाम है तो सभी जानते हैं, जब स्टूडेंट्स यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, किंगफिशर एक ब्रांड नेम है जो कि इंटरटेनमेंट में टीवी में भी है. NDTV गुड टाइम्स जो किंगफिशर का हुआ करता था, सेम बर्ड. किंगफिशर एयरलाइंस, किंगफिशर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, नॉन अल्कोहलिक एंड अल्कोहलिक, उन दोनों में भी ये ब्रांड नेम. तो किंगफिशर ने मल्टीपल क्लास में सेम वही बर्ड के साथ वही कंपनी रजिस्टर्ड थी. तो इस तरह से करके सिलेक्ट करना और उसके बाद उसे रजिस्टर करना डिफरेंट क्लास में. मैंने नवरक्षक का एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले. नवरक्षक को हमने जो है कि 2 क्लास में रजिस्टर किया है, क्लास 8 एंड क्लास 9, दोनों ही जो है कि मेडिकल प्रोडक्ट्स की क्लासेज हैं. एंड 9,000 हमने फीस पे करी, एंड बाकी अटॉर्नी की फीस है. ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जब हम फाइल करते हैं एप्लीकेशन को, एक उसकी जो है कि स्क्रूटिनाइज होती है कि वेदर द ऑल थिंग्स आर रेडी टू सेट, देन दे एग्जामिन एंड दे इशू ए ऑब्जेक्शन रिपोर्ट कि अगर इसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो. अब चूंकि आपने पूछा है, डिटेल में तुम्हें बता ही दूं. जी, थैंक यू सर. So we will also encourage our student to file their trademark. Sure. To secure their logo and design anything. If they have a DPIT certificate they have secured, they can write to us through you. आप हमें उसकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कीजिए कि this is the startup we have and they are willing to file a trademark and this is the trademark and this is the DPIT certificate. 2 ही चीजें आपको देनी है, DPIT सर्टिफिकेट और ट्रेडमार्क साथ में भेज दीजिए, हम फाइल करेंगे आपके लिए. ओके सर. पेटेंट भी फाइल करते हैं, ट्रेडमार्क फाइल करते हैं, डिजाइन और कॉपीराइट भी फाइल करते हैं, सभी स्टार्टअप्स के लिए. एंड फ्रॉम द NRDC इट इज लाइक ए गवर्नमेंट स्कीम, वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस एंड विदाउट टेकिंग एनी चार्ज फ्रॉम द स्टार्टअप. सो ये डायरेक्टली ओपन है. इवन गलगोटिया मतलब कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए भी हमारी चार्जेस जो है कि हमारे फीस फ्री है, हम ये करते हैं. आप कोई भी निसंकोच हमें लिख सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं फाइल करने के लिए. तो ये फाइल होने के बाद 3 महीने के लिए वो पब्लिश होती है ट्रेडमार्क जर्नल में. उसके बाद किसी को कोई अपोजिशन करना होता है तो लोग अपोज करते हैं, अदरवाइज उसके बाद जो है कि वो आपको रजिस्टर हो जाता है, काउंट हो जाता है आपको. एग्जांपल में जैसे कि रिसेंटली मैंने फाइल किया, दिवेंदु ने क्वेश्चन पूछा विद सोर्स वी गेटिंग ट्रेडमार्क्स. सिंपली अभी तो आपको गूगल सर्च ही है जिसमें आप देख सकते हैं ब्रांड नेम कैसे हैं, और ट्रेडमार्क सर्च करने के लिए ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री है, वहाँ पे जाकर के भी आप सर्च कर सकते हैं. बेसिकली द नेम, बाय नेम वी सर्च एंड अगेन वी हैव टू पुट फॉर ए क्लास बिकॉज एवरी विच क्लास यू आर गोइंग फॉर सर्चिंग. लाइक आपके प्रोडक्ट की रेंजेज हैं, अगर वो आपका एग्रोकेमिकल्स वगैरह है तो 5 है, अगर हमारे मेडिकल गाउन है तो 8 और 9 है, सर्विसेज में है टेक्निकल कंसल्टेंसी एंड अदर थिंग क्लास 42 है, और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एंड बिजनेस है जैसे एग्जीबिशंस वगैरह लगाते हैं, क्लास 35 भी है. तो अभी हमने रिसेंटली क्लास 35 में 2 ट्रेडमार्क फाइल किए थे, एफएक्सपो एंड एरो इंडिया, जो एरो इंडिया शो होता है. अब एरो इंडिया शो हमारा जो है कि ऑब्जेक्शन में है, रीजन बीइंग कि हमने टर्म यूज किया है इंडिया.
तो नेशन कंट्री का नेम, कंट्री का फ्लैग यूज करके हम ट्रेडमार्क को नहीं फाइल कर सकते, ऐसा लॉ में कहा गया है। तो हमारे तो उसके लिए हमारी क्लियरेंस है कि हमने जो फाइल किया है वो डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फाइल किया है एप्लीकेशन, एंड इट विल बी ग्रांटेड दैट वी एक्सपेक्ट। सो हमारे ऑब्जेक्शन हमने जो है कि रिस्पॉन्स दे दी। तो आप जो है कि इस तरह से ना सोचें, नाम जो है कि अपने कॉइन टर्म्स ही ले, जैसे डेफेक्सपो वर्ड था वो रजिस्टर हो चुका है, लेकिन एरो इंडिया जो है कि रजिस्टर नहीं हुआ है। वही एग्जाम्पल। कोई क्वेश्चन है? मेरी आवाज सुनाई? नो सर, नो सर। ओके, सो तो दैट इज द प्रोसेस बेसिकली। आप सर्च करने के लिए, ब्रांड नेम सर्च करने के लिए दो कुछ एक कॉमर्शियल सर्च डेटाबेसेस भी हैं। आप उसके बजाय जो है कि आईपी इंडिया की वेबसाइट पे जाएं, ट्रेडमार्क्स के टैब में जाएं और सर्च करें नेम को, वो पब्लिश्ड है या नहीं पब्लिश्ड है, और डिफरेंट डिफरेंट क्लास में करके ट्राई करें। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि केस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, ब्रांड नेम में बता ही देता हूँ। होंडा मोटर्स वर्सेज होंडा अप्लायंसेज करके एक केस है। पंजाब से एक कंपनी थी जो होंडा अप्लायंसेज के नाम से, होंडा ब्रांड नेम से जो है कि वो प्रेशर कुकर बनाती थी। काफ़ी अच्छी उनकी मेटलर्जी थी, बहुत अच्छा एल्युमिनियम यूज करते थे, एंड काफ़ी टिकाऊ, जो कि हमारे अदर इंडियन ब्रांड्स जो है कि हॉकिंस यूनाइटेड को टक्कर देकर के मार्केट में सेल कर रहे थे। तो किसी कंपनी ने उनको केस नहीं किया, हॉकिंस ने या यूनाइटेड ने केस नहीं किया, प्रेस्टीज ने केस नहीं किया, प्रेस्टीज जो कि टीटी का प्रोडक्ट है, हॉकिंस भी हमारे इंडिया का ही प्रोडक्ट है। तो किसी ने केस नहीं किया, बल्कि केस किया होंडा मोटर्स ने, कि हाउ यू कैन यूज द नेम होंडा ऑन द प्रेशर कुकर, वी नेवर एंटर्ड इनटू दिस मार्केट। ये केस था। अब यहाँ पर क्या था, नाम को यूज करके पब्लिक में अब मार्केट रेप्यूट को नुकसान पहुंचाना, ऑल्दो इट वाज ए गुड प्रोडक्ट, लेकिन वो केस उसमें वो हार गए। अभी किसी दूसरे ब्रांड नेम से वो बनाते हैं, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उनको वो नाम छोड़ना पड़ा। तो कभी भी ऐसा नहीं कीजिए कि जैसे कि दूसरे क्लास के प्रोडक्ट में, अब यहाँ तो होंडा मोटर्स कॉमन नेम था, नो पहचाना हुआ नाम था, तो इसलिए सर्च कर लेना जरूरी है कि दूसरे क्लास में होंडा रजिस्टर्ड था, बट वो कभी होम अप्लायंसेज में उन्होंने रजिस्टर नहीं किया था होंडा मोटर्स ने। तो ऐसा है, कुछ एक कंपनी के ब्रांड नेम्स ऐसे हैं। आप अगर इसको समझना चाहें तो कभी आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाएं और आप सीडी डीवीडी प्लेयर्स को देखें, तो उसमें आपको बहुत सारे मार्केट में ब्रांड नेम ऐसे मिल जाएंगे छोटे छोटे। तो काउंटर फीट में ऐसे चलता है, लेकिन वो उनकी कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं होती है, बट बीइंग ए स्टार्टअप आपको थोड़ा सा सावधानी लेना होगा कि कल को कोई जो है कि आपको केस ना करे। ब्रांड नेम के अलावा प्रोडक्ट रेंजेस के भी जो नेम्स होते हैं उनको भी आपको सोचना होगा थोड़ा बहुत। और सेंटिमेंट्स की बात पे अगर हम करें ब्रांड नेम सोचने पे, तो आप सबने जो है कि फेयर एंड लवली का केस सुना हुआ है, एंड अभी फेयर एंड लवली का नाम बदला जा चुका हुआ है। फिर ब्रांड नेम में अगर एक केस की और बात करें तो कैडबरी एक्लेयर्स का नाम बदल करके अब कैडबरी चॉकलेट्स हो गया है। उनको भी एक्लेयर्स वर्ड यूज नहीं कर सकते थे कैडबरीज, इसलिए उनको नाम छोड़ना पड़ा और वो चॉकलेट्स हो गया। इसलिए वो जो उन्होंने पहला ऐड जो दिया था टीवी में सब जगह पे कॉमर्शियल्स में, उसमें लिखा था कोर्ट में वो ऑर्डर ऑर्डर कैडबरी एक्लेयर्स बन गया है चॉकलेट्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्च करके आपको देखना होगा कि आप किसी और को इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली इसमें जो है कि डैमेजेस जो है कि क्लेम होते हैं। तो इसको रजिस्टर करने समय अपना ख्याल रखें। एनी अदर क्वेश्चंस? Okay, participant, you can unmute yourself for asking your query. Okay, so there is no question, sir. ओके, देन फिर हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स एंड इंजीनियर्स की कहानी और शुरू करते हैं। ये आईआईटी रुड़की के 3 स्टूडेंट्स, तीनों एक सिविल में और एक इलेक्ट्रॉनिक्स में, तीनों आगे पीछे बैच में थे, और इन्होंने सोचा कि जो हमारे टॉयलेट्स बनाए जाते हैं, बेसिकली पब्लिक टॉयलेट्स जो बनाए जाते हैं, उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है उसका मेंटेनेंस। कहीं पर भी जब भी टॉयलेट बनाए जाते हैं मेंटेनेंस करना, अगर आप देखें तो सुलभ का जो कॉन्सेप्ट है वो मेंटेनेंस के बेसिस पे ही इस्टेब्लिश्ड है। अदरवाइज सेल्फ मेंटेनेंस सोचने के लिए अब 3 इंजीनियर मिलकर के आगे आए, उन्होंने बनाया कि इसका फ्लोर, इस टॉयलेट के फ्लोर एंड डोर एंड एवरीथिंग जो है कि इन्होंने बिल्कुल ही IoT इनेबल्ड करके किया हुआ है। एंड ब्यूटी इसकी ये है कि इस टॉयलेट सिस्टम में IR सेंसर्स नहीं यूज हुए, ठीक है। तो ये स्टार्टअप भी आया, हमारे इंडियन ऑयल से फंडेड था ये। इंडियन ऑयल के लिए जो हम स्टार्टअप का फंड है वो NRDC मैनेज करती है,
तो हमने इस स्टार्टअप के साथ काफ़ी काम किया 3 साल में, और ये टॉयलेट बन के अभी रेडी है और लगभग 50 जगह पे इंस्टॉल भी हो चुका है ये टॉयलेट। 50 में से 40 10 अभी बाकी हैं प्रोजेक्ट जिनको मिला हुआ है। तो इनका जो इको टॉयलेट है इसमें कम्प्लीटली कई 4 पेटेंट आए इससे, और 3 डिजाइन, और जो है कि 4 कॉपीराइट एप्लीकेशन इसमें से आई हैं। कॉपीराइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एंड वाटर मैनेजमेंट एंड उसके डोर मैकेनिज्म जो है कि इनका सॉफ्टवेयर है पर्टिकुलरली लेकिन एक ही सेंट्रल बेस्ड गुड़गांव से ये पूरे इंडिया के टॉयलेट्स को कंट्रोल करते हैं कि वेदर यूजर एंट्री इज टू बी मैनेज्ड और नॉट। फिर इनके सॉफ्टवेयर में ये भी है कि इफ द पर्सन जो यूजर है, इफ ही पासेस द यूरिन एंड कम उसके बाद अनअटेंडेड वो वापस आ जाता है बिना फ्लश किए हुए, तो वो फिर 6 लीटर पानी से फ्लश करता है, और यूजर के टाइम बिहेवियर को ये रिकॉर्ड करके फिर वो फ्लशिंग का जो है कि वाटर लेवल को करता है। और सेंसर्स नॉन विजिबल सेंसर्स यूज में है इसमें, जिसमें कि किसी तरह से टैबू ना हो लोगों को कि यहाँ पे ब्लिंक कर रहा था एक, जैसे कि फिल्टर्स में देख रहे होते हैं कि एक रेड लाइट ब्लिंक कर रही होती है, तो कॉमन लोग सोचते हैं कि शायद इसमें कोई कैमरा ना हो हमारे सामने, तो इसलिए टॉयलेट में इन्होंने वो ब्लिंकिंग IR सेंसर्स नहीं यूज किए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज है कि जो इसका इस टॉयलेट में जो ब्लैक वाटर है वो सिर्फ उसी को रिसाइकल करके फ्लश करने के लिए यूज किया जाता है, एंड उस मैकेनिज्म के साथ जो इनके जो पेटेंट एप्लीकेशंस हैं बेसिकली वहीं पर हैं कि जो आउटलेट से पानी जो आ रहा होता है फ्लश से और जो फ्लोर क्लीनिंग के लिए यूज होता है वो उतना ही ट्रांसपेरेंट और क्लियर है जितना कि टैप वाटर। तो इनकी जो टैंक है ऊपर ओवरहेड टैंक है, उसके दो कंपार्टमेंट है। फर्स्ट क्लियर वाटर, क्लीन वाटर जो कि सप्लाई से आ रही होती है, चाहे वो मोटर से पंप करके की जाए या फिर जो है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ली जाए। सेकंड जो टैंक है वो ब्लैक वाटर ट्रीटेड वाटर है जो कि फ्लशिंग एंड फ्लोर क्लीनिंग के लिए यूज की जाती है। Sorry to disturb you, sir. Sir, your PPT is not moved. It is stuck on 13 number. Sukriti Social Foundation. सुकृति का टॉयलेट ही मैं आपको दिखा रहा था, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। Okay. Completely everything is managed. So they were 3 students, they have come up with this startup and they got about 10 crore rupees fund from Indian Oil. पहले फेज में हमने 2.5 करोड़ की फंडिंग करी थी, दूसरे फेज में हमारी लगभग 7 करोड़ की फंडिंग है। तो 50 टॉयलेट उन्होंने बना के डिलीवर भी कर दिए हैं कम्प्लीटली सेंसर्स के साथ, और सभी आउटलेट्स में लगने का लगभग इनका प्लान है बाय द एंड 25,000 जो है कि आउटलेट्स हैं IOCL के, तो शायद वहाँ तक ना पहुँच पाए अभी जल्दी, लेकिन अभी 50 तक पहुँच चुके हैं। फिर ऐसे ही आपके इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की तरह से ही ये भी एक स्टार्टअप है आपके पास में ग्रेटर नोएडा में। ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स फ्रॉम IIT भुवनेश्वर, इन्होंने सोचा कि एक प्रॉब्लम एरिया कि पाइपलाइंस की रिपेयरिंग भी होती है, क्योंकि पाइपलाइंस में कोरोजन होता है, तो कोरोजन के बाद रिपेयरिंग के पर्पज से जो है कि उसमें रिपेयरिंग का काम करना चाहिए। इन्होंने जो मटेरियल डेवलप किया वो मटेरियल से रैपिंग करते हैं, पहले उसकी बेसिकली ग्राउट है, उसको लगाने के बाद रैप करके वो रिपेयरिंग करते हैं। और इनको भी जो है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इनके भी 3 पेटेंट एप्लीकेशंस फाइल हुए हैं और एक सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर का जो है कि कॉपीराइट एप्लीकेशन भी फाइल हुआ है। एंड बासेटर्स के इन्होंने ट्रेडमार्क अपने नाम से पहले ही रजिस्टर कर रखा था। तो मटेरियल का द मशीन जो कि उसको रैप करती है, रैपिंग मशीन के लिए इन्होंने पेटेंट फाइल किया हुआ है। और ये भी जो है कि NRDC इनक्यूबेट बेसिकली IOCL फंडेड, और हमने सपोर्ट किया। इनके पास भी अभी इन हैंड इनके पास 6 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं, यही पाइपलाइन रिपेयरिंग के ही जॉब के लिए। तो स्टूडेंट्स आप लोग को जो है कि आइडिया लाना है, प्रोडक्ट को स्टैब्लिश करना है, एंड देन सर्विसेज में जा रहे हैं। तो सर्विसेज ये जैसे कि ये मैंने टॉयलेट दिखाया, ये सर्विसेज में ही है, कंप्लीटली कमीशनिंग एंड इरेक्शन एंड डिलीवरी ऑफ द टॉयलेट्स एंड देन मेंटेनेंस ऑफ दैट पार्ट ऑफ सर्विस। सो दोनों तरह के हैं। यहाँ पर इनके पास अपने प्रोडक्ट्स हैं, इनको असाइनमेंट्स मिलते हैं और जाकर के ये रैप अप ये रिपेयर वर्क करते हैं। तो ये 2 एग्जांपल्स मैंने लिए, और एक एग्जांपल मैंने और आपको दिखाया था, ये शायद ये दिख रहा होगा यहाँ पे, फैकल्टी लेड स्टार्टअप, शी हैज डेवलप्ड दिस प्रोडक्ट, नाउ शी इज गोइंग टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल। खुद से ही उनको मैन्युफैक्चर करके अपना प्रोडक्ट सेल करना है। तो ये एक प्रोडक्ट का स्टार्टअप है, बाकी दोनों जो है कि प्रोडक्ट का सर्विस दोनों ही है उसमें। यहाँ पे सर्विसेज नहीं है बल्कि प्रोडक्ट है, परचेज एड को मार्केट में सेल करना है। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने बताया। टेक्नोलॉजी डेवलप करी, टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश किया, जो TRL आपने पहले लेक्चर में पढ़ा, कॉन्सेप्टलाइजेशन से लेकर के मार्केट रेडी तक उन्होंने किया,
और ये एनआरडीसी की हमारी 2 स्कीम्स हैं जो कि अभी तो दोनों की एप्लीकेशन लाइन क्लोज हो चुकी हैं, बट फिर से अभी अप्रैल में दोबारा से लॉन्च होगी। तो सभी स्टार्टअप्स दे कैन कीप ए वॉच ऑन एनआरडीसी वेबसाइट। अदरवाइज मैं गौरव सर को इन्फॉर्म कर दूंगा मीनाक्षी मैम को कि हमारी एप्लीकेशंस लॉन्च हो चुकी हैं और आप लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 अलग अलग स्कीम्स हैं, एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए है जो कि एडवांस लेवल की है, एंड इनिशियल स्टेज पे जो है कि हमारी एक सीड फंडिंग की स्कीम है जिसमें कि हम लगभग 30 लाख रुपए की फंडिंग करते हैं। और ये हमारा आपका स्कीम है सीड फंडिंग की 30 lakhs टू ईच, एंड हमारा टारगेट है कि 5 से 7 लोगों को हम कर सकें। ऐसे ही ये जो टीडीवीसी है इसमें तो सिर्फ स्टार्टअप्स ही नहीं बल्कि स्टार्टअप से आगे भी हमने लिया है कि जो कंपनीज हैं या फिर एमएसएमई हैं वो भी जो है कि आके इस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में आके पार्टिसिपेट कर सकती हैं। दोनों ही इन्वेस्टमेंट पैटर्न पे चल रहा है, जैसे कि अभी सब ये स्टार्टअप्स आप लोग पिचिंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, तो ये इन्वेस्टमेंट है एनआरडीसी की तरफ से। ये 2 स्कीम्स आप फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड फॉर द प्रोटेक्टिंग योर आईपी इट इज ऑलवेज वेलकम। आप कभी भी हमें लिख सकते हैं जो भी आपका ट्रेडमार्क, डिजाइन, कॉपीराइट या फिर पेटेंट के लिए फाइल करना हो। सो बाकी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ लीजिए। मुझे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, काफी सारे स्टार्टअप अटेंड कर रहे हैं प्रोग्राम को। आपकी आवाज नहीं आ रही है गौरव सर। Okay. So dear participant, I would like to request you all that if you have any query, you can unmute yourself and ask the same. Now we are open for the question answer session. Hello. Yes. I am Divyendu Mukhopadhyay. I have one query regarding to the startup is that कोई स्टार्टअप जो है उसका वो ग्लोबल प्रेजेंस करना चाहता है पर उस स्टार्टअप का जो ट्रेडमार्क वो रजिस्टर हो चुका है। ये मतलब in India it has been registered, but we are seeing that there is some similarity of the name and design which has been registered in some other country, and how we can it can be, is there any problem while doing business globally at that time? कोई प्रॉब्लम ऐसे फेस होगा कि नहीं? ये बिल्कुल प्रॉब्लम होगा। अभी रिसेंटली एक केस था, एक आई ड्रॉप के लिए एक केस था कुछ दिन पहले। आई ड्रॉप का एक केस था, मुझे अभी इसका नाम नहीं याद आ रहा है, बेसिकली काफी फेमस केस है। मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मुझे सर्च करने दीजिए। रिसेंटली केस हुआ था जिसमें कि वो जो कंपनी थी वो एक ग्लोबल कंपनी थी, और ये जरूरी है अभी तो मैड्रिड प्रोटोकॉल में जब हमने एंट्री कर ली है तो हम कर सकते हैं। एक पास्ट में एक केस था, वो भी आप समझेंगे तो आपको काफी समझ में अच्छे से डिटेल में आ जाएगा। आप पेप्सी का जो प्रोडक्ट है माउंटेन ड्यू जो ब्रांड नेम है पेप्सी, माउंटेन ड्यू को इंडिया में रजिस्टर नहीं कर सकती, मार्केट करती है वो इसको, लेकिन वो उस केस को हार चुके हैं, माउंटेन ड्यू केस को हार चुकी है। तो आप ग्लोबल प्रेजेंस में अगर जाना चाहते हैं और इन्फ्रिंजमेंट के चांसेस हैं तो आपको जो है कि ड्रॉप करना पड़ेगा अपना ब्रांड नेम अगर वो पहले से रजिस्टर्ड है, क्योंकि लॉ में 3 चीजें हैं। दो बेसिकली अगर आप डिफरेंस देखें दिव्येंदु, पेटेंट में हम नॉवेल्टी की बात करते हैं, and prior use is not permitted in patent and design, but in trademark and copyright prior use is permitted. So in case आपका किसी से coincide कर रहा है तो आप लीगल एस्पेक्ट्स पे थोड़ी सी स्टडी कर लीजिए, काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं, मैं इसकी लीगल ओपिनियन आपको भिजवा दूंगा। बट हमेशा ही नाम को सोचने के लिए आपको सोचना होगा कि आप किसी का इन्फ्रिंज नहीं कर रहे हैं।
Any other query? ये दोनों में यूज डेट आल्सो मैटर करती है। अगर वो दूसरी कंपनी जो है पहले से यूज कर रही है तो सिमिलरली आप जो है कि केस में जा सकते हैं, बाद में आपको इन्फ्रिंजमेंट सूट वो कर सकते हैं। प्रोडक्ट वो वेट करेंगे आपके प्रोडक्ट लॉन्च होने का, प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद ही केस करेंगे। आपके ट्रेडमार्क रजिस्ट्री पे शायद उन्होंने 3 महीने में ना किया हो, लेकिन प्रोडक्ट लॉन्च पे वो जरूर से कर देंगे कि दे आर यूजिंग माय नेम, जैसे कि मैंने आपको बताया होंडा वर्सेज होंडा अप्लायंसेस का जो हुआ था। सो कई बार हमें जो है कि अगर प्रायर यूज हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते तो हमें जो है कि ड्रॉप करना पड़ेगा। आपके केस में मेरा ओपिनियन तो यही है। जैसे कि पेप्सी वाले में, पेप्सी का जो माउंटेन ड्यू का केस था, माउंटेन ड्यू जब इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ था प्रोडक्ट, पेप्सी बिजनेस में ही नहीं थी इंडिया में उस समय। तब उस समय हैदराबाद में एक बिजनेसमैन ने माउंटेन ड्यू पैकेज ड्रिंकिंग वाटर नाम से रजिस्टर कर रखा था एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड केस। उन्होंने न्यूज़पेपर में ऐड भी दिए थे और वो केस को जीत गए। ठीक इसी तरह से थालापाकट्टी इंडिगल बिरयानी के भी ब्रांड नेम पे केसेस चले हैं और उसमें भी ड्रॉप करना पड़ा है। तो ये तो इंडिया में ही हो गया कंट्री स्पेसिफिक डोमेस्टिक लॉ में, बट बाहर के लॉ में भी वो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए रजिस्टर करते समय। होपफुली दिव्येंदु क्वेश्चन को मैंने आंसर कर लिया। कोई और क्वेश्चंस? Any other query? No, sir. Thank you, Okay. sir. Okay. Good evening, sir. Hello. जी हाँ, बताएं। Sir, my name is Rajkiran Kumar. I am from Section 3, MBA branch, sir. I have a question, sir. Please. How can I find out if someone else will using my trademark, and I am interested in sir, registering that. That trademark search facility is available there. Go to IP India website. On the IP India website, similarly, if the trademark is already established and someone is marketing it, तो आपके Google search में ही वो brand name आ जाएगा simply if it is in market. So ये आपके पास बहुत अच्छा टूल है कि आप Google search से जान सकते हैं। बेसिकली ट्रेडमार्क के ब्रांड नेम्स पहले जो है कि कमर्शियल इंडेक्सेस जो होते थे, इंडिया मार्ट जैसे जो पहले येलो पेजेस होते थे उसमें भी पब्लिश होते थे, लेकिन अभी आपके लिए सेफेस्ट वे है, बीइंग इंजीनियर यू शुड गो टू द IP India वेबसाइट, check from there, go to trademark tab and then search for that word mark. Whatever trademark you have decided, maybe आपने उसको एक नाम दिया होगा, जो भी नाम दिया होगा आपने अभी अगर बता सकते हो तो मुझे नाम बता दीजिए क्या रखा है आपने ट्रेडमार्क के लिए। No, sir. Just ask question, sir. आपको लिंक भी दे दिया है मयंक जी ने। तो यहाँ पे अपने ब्रांड नेम को आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जब सर्च करते हैं तो क्लास आपको देना होता है बारी बारी से जिस प्रोडक्ट रेंज में आप करना चाहते हैं। सो ये पॉसिबिलिटी है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ग्लोबली सर्च करने के लिए भी कुछ टूल्स है, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। हम लोग ऑर्बिट यूज करते हैं, क्वेस्टल का प्रोडक्ट, जिसमें कि ट्रेडमार्क ब्रांड नेम सर्च जो है कि हो जाता है ग्लोबल लेवल पे। हमारे IP इंडिया का सर्च टूल भी काफ़ी अच्छा है, इसमें भी उस ब्रांड नेम से सर्च हो जाती है, नॉट रजिस्ट्री के अलावा दूसरी जगह पे भी। Okay, sir. Thank you. सर एक मेरा क्वेश्चन है सर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है सर। जी बताइए। स्टार्टअप है, आइडिया है मेरे पास जी जी। मतलब सर किसी ये जो स्मॉल फार्मर होते हैं तो उनके जी। लिए कोई वेबसाइट प्रोवाइड की जाए। मान लीजिए कि उसको प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो अपने जितने भी फील्ड है उसका जितना जितना रिक्वायरमेंट है वो प्लेस कर सकता है और मतलब लगाए, एक वेबसाइट हो, ठीक है ना सर, और उस पे वो वेबसाइट और ऐप है किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए वेबसाइट और ऐप है। आप अगर इस एक्टिविटी को देखें तो सभी जो कृषि संस्थान है, कृषि एग्रीकल्चर रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका जो एक्सटेंशन एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनका काम ही यही है। और इसके अलावा जो आपके गांव तालुका लेवल पे भी कृषि विकास केंद्र होते हैं, KVK, जी जी कृषि मित्र होते हैं,
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो किसानों तक जो है कि सूचना को पहुंचाएं। एक वेबसाइट या पोर्टल से जो है कि उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि उनके साथ किसी एक आदमी का इंटरेक्शन हो, या कहीं वो फोन करके बात कर सके, या कहीं उनसे जो है कि वो 1-to-1, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हम सोचते हैं कि इसमें जो है कि ये 10 तरह की ही प्रॉब्लम होगी परमुटेशन में। अगर हम सोचें FAQ बना के या चैटबॉट बना के आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर फील्ड की, हर फार्मर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। आपको काफ़ी ऑप्टिमाइज करके जो है कि वो क्वेरी आंसर जो है कि हैंडल करना होगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड बहुत सारे पोर्टल्स भी हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट एजेंसीज अपनी अपनी जो है कि फार्मर्स की वेलफेयर के लिए करती हैं। जैसे कि महिंद्रा की अपनी एक पोर्टल है जो किसानों की सर्विस के लिए है। फिर उसके बाद यूरिया कंपनीज है, वो भी अपने लिए करती है। उनके भी किसान केंद्र होते हैं जिनके थ्रू करती हैं। और अगर आप सिंपली देखें, जो कैश क्रॉप्स होते हैं, शुगर केन इंडस्ट्री में भी शुगर केन के जो अपने कोऑपरेटिव्स होते हैं, उनके भी अपने फार्मर्स हेल्पलाइन, अपनी हेल्पलाइन होती है, अपने उनके जो है कि कॉन्टेक्ट पॉइंट्स होते हैं, एंड उनके थ्रू जो है कि काफ़ी अच्छा काम होता है। आप अगर फार्मर्स के डायरेक्टली कुछ करने के लिए सोच रहे हैं तो आप कियोस्क बनाइए, फार्मर्स के पास अवेलेबिलिटी बनाइए, एंड उनको फार्म इक्विपमेंट्स के लिए अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं। सर मेरा ये सवाल है ना, एक वेबसाइट या ऐप हो जिसपे मतलब फार्मर को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए कि उसका है कितना यूरिया का रिक्वायरमेंट है, तो मतलब एक टीम उसको भेजा जाए कम लागत पे, वो पूरा मतलब जांच करके कितना उसमें कितना यूरिया डालना है, क्या डालना है, वो एक ही वेबसाइट से सब किसान, मतलब अगर किसान को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो एक ही वेबसाइट रहेगा, ठीक है, और वो ऑर्डर लगाता है कि मेरे खेत में ये प्रॉब्लम है, तो टीम जाके जांच करके और जितना यूरिया ये सब होगा कम लागत पे पूरा उसका प्रॉब्लम सॉल्व करे, जो मतलब जिनको जानकारी नहीं है। ऐसा मेरा आइडिया था सर। नहीं, बिल्कुल आपका आइडिया आपने अभी सोचा है, लेकिन इस पे काम पहले हो चुका है। इस पे काम हो चुका है। आप देखिए, ITC का ऑलरेडी किसान सेवा पोर्टल है और वो ये काम करती है। तो मतलब ग्रामीण इलाके में भी जाके, मतलब अगर कोई हाँ, चाहे बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। ITC करती है, महिंद्रा करती है, और ट्रैक्टर कंपनीज बहुत सारी करती है। ओके सर, ओके। इसी आइडिया पे काम करती है, और सबसे इफेक्टिव ITC कंपनी कर रही है इस समय। सीड्स कंपनीज भी बहुत सारे काम करती है इसमें। फर्टिलाइजर की कंपनीज तो है ही ऑलरेडी। अभी जो और भी कुछ कुछ जैसे स्टार्टअप्स आए हैं जो कि फार्मर्स वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि सिंपली अभी आपके पास जो कंट्री डिलाइट है, जो कि दूध लेती है और एप्पल्स भी लेके आ रही है, तो उन्होंने प्रोडक्ट स्पेसिफिक सोच करके सभी जब जो सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट के है इम्प्लीमेंटेड। Okay. Any other query? Yes, sir. Kushal. Okay. Sir. May I ask? Yes, yes. Sir, if improvising a current idea can be termed as innovation, like in this case, the farmer one case, like improvising it by making a data, मतलब farmers in a whole country, and then analyzing the requirements of nations consumption, and then telling farmers to produce this specifically this on this field where that can be grown in maximum amount effectiveness. Sir, ठीक है, लेकिन मुझे फिजिबल नहीं लग रहा। बल्कि आप सोशल कॉज सोचे, इम्पैक्ट सोचे, बहुत अच्छा लगेगा, फार्मर्स के लिए कर रहे हैं, बट बहुत बड़ी बैंडविड्थ चाहिए और बहुत बड़े लेवल पे काम करना होगा, और काफी लोग कर रहे हैं। रेप्लिकेटिव वर्क है, आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। सजेस्टिव एंड कंसल्टेंसी टू द फार्मर्स, आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। Thank you so much, sir. I would like to request our
Dean UCRD, Professor Meenakshi ma'am, to facilitate our speaker with a token of love, a token of gratitude. First of all, sorry, sir, I am little late because I was in a meeting. Thank you so much for your session, and I am sure our stakeholders, they get the benefit. Sir, please receive this memento of honor from behalf of Galgotia University. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. No. Dear participant, we have sent you the feedback form link. So kindly provide your valuable feedback for this session. And thank you once again, sir, for accepting our invitation. Thank you, sir. Yes, Mayank, if you want to say anything. Yeah, as I heard that many of you has many queries regarding innovation and the startups. So I will request to you that if you have any queries regarding startups and innovation, you may definitely contact our Institute Innovation Council, IIC. I'm dropping my contact details here, and you may also meet us at B005 Incubation Center. You may definitely call me or Gaurav sir, anyone, and we will definitely help you regarding any of your ideas. We will also help you in improvising your idea regarding documentation support and all these things. So I'm dropping our contact details here, so you may definitely contact us. If you still have any query, please you may ask. Hope everyone get the feedback link. Okay. Thank you. Thank you so much to actively participate in the event. Okay. Thank you. Thank you, sir.